लाइव करना करके नहीं तो आज अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए भारत के स्वाधीनता संग्राम ने कई आयाम किए। ये लड़ाई राजनीतिक और क्रांतिकारी थी, लेकिन ये हमारे अपने बौद्धिक और वैज्ञानिक आंदोलन को स्थापित करने का संघर्ष भी था। इसी संघर्ष में भारत के वैज्ञानिक को नुकसान हुआ और 19वीं शताब्दी में एक नए वैज्ञानिक समुदाय का उदय हुआ, जिसने न केवल अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि भारतीयों को अपनी विशिष्ट पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए एक स्वदेशी आंदोलन को भी जन्म दिया। ऐसे कई नाम हैं जिन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्ता और राजा राम मोहन रॉय से लेकर विवेकानंद तक ऐसे कई नाम हैं और ऐसे कई दर्जनों नायक हैं जिन्होंने भारतीय समाज को जगाया है और उसका मार्गदर्शन किया है। The Indian society, guiding the Indian society.
इन दिग्गजों ने अंग्रेजों की गुलामी और भेदभाव को मिटाने, युवा भारतीयों को स्वतंत्र रूप से सोचने, खोज करने और ब्रिटिश राज से मुकाबले को सशक्त बनाने के लिए पत्रिकाओं और वैज्ञानिक समाजों तथा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। पहला स्वदेशी राष्ट्रीय व्यक्ति का वैज्ञानिक संस्थान भारत में 1876 में स्थापित किया गया था और इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और इसमें पहली पीढ़ी के भारतीय वैज्ञानिकों ने इस संस्थान के माध्यम से विज्ञान को सीखना और समझना शुरू किया। इस तरह उन्होंने एक राष्ट्रवादी प्रयास शुरू किया, नेशनलिस्टिक एंडेवर। 19वीं शताब्दी के अंत में स्वराज यानी कि भारत की स्वतंत्रता का विचार जोर पकड़ने लगा। आचार्य जेसी बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे वैज्ञानिक दुनिया के मंच पर शक्तिशाली आवाज बन गए। इस बार जब हम औपनिवेशिक शासन से कड़े संघर्ष के बाद भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम 19वीं सदी के विचारकों और वैज्ञानिकों के बलिदान और योगदान को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के पुनरुत्थान में आने वाली बाधाओं के खिलाफ खुद को मुखर किया और भारत के एक वैज्ञानिक समुदाय की नींव रखी। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर और भी काफी कुछ देखिए केवल इंडिया साइंस पर। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारत की आजादी के 73 साल होने के उपलक्ष्य में हम आपको इतिहास के उस दौर में ले जा रहे हैं जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों पर ध्यान देने और ब्रिटिश बौद्धिक उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत की बढ़ती असंतोष की भावना को देखा गया था। हम भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के स्वदेशी बौद्धिक वैज्ञानिक संस्थानों, पत्रिकाओं और परंपराओं की स्थापना में योगदान पर एक नजर डालेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत किस तरह स्वदेशी और स्वराज आंदोलन के जन्म की गवाह है और इस दौरान किस प्रकार स्वतंत्र भारत का आह्वान किया गया। इससे पहले कि हम दिग्गजों के योगदान पर ध्यान दें, हमें सैकड़ों साल पहले देश में हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को समझना होगा। भारत की समृद्ध वैज्ञानिक परंपराएं। भारत में खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कपड़ा और इस्पात निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक अच्छी तरह से स्थापित ज्ञान प्रणाली थी। भारतीय खगोल विज्ञान को इसके उन्नत उपकरणों और माप की सटीकता के लिए जाना जाता था, जो कि यूरोपीय खगोल ज्ञान के समकक्ष थी। भारत में दिल्ली, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में समृद्ध खगोलीय वेधशालाएं थी। इनका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। सदियों से भारत ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए अंकों की दशमलव स्थानीय मान प्रणाली सबसे पहले भारत में ही विकसित की गई थी। 628 ईस्वी में प्राचीन भारतीय विद्वान और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले शून्य और उसके प्रयोग को परिभाषित किया था और इसका पहला प्रतीक भी विकसित किया, जो संख्याओं के नीचे एक बिंदु के रूप में होता था। उसके बाद एक अन्य भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली में पहली बार शून्य का प्रयोग किया। भारत में उन्नत सिंचाई प्रणालियां भी थी, जो क्षेत्र की आवश्यकता और स्थान के अनुसार अत्यधिक विकसित और विभिन्न थी। उदाहरण के लिए थार रेगिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में किसानों ने टैंकों में अपवाह जल को स्टोर करने के लिए खाद्यान्न प्रणाली का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में फाड़ प्रणाली थी और दक्षिण भारत में खुदी मरम्मत की पद्धति उपयोग में लाई जाती थी। इसके अलावा हमारे यहाँ ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं जिनसे पता चलता है कि अंग्रेजी राज से पहले और ब्रिटिश युग के दौरान भारतीयों को रोपाई और कटाई तकनीक तथा खाद तैयार करने के तरीकों के बारे में व्यापक ज्ञान था। भारत का खनन और धातु विज्ञान में भी एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड था। भारतीय लौह और इस्पात के सामानों में हथियार भी शामिल थे, जिनकी काफी मांग थी।
मध्यकालीन और पूर्व ब्रिटिश काल में तेलंगाना को धातु विज्ञान में एक अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त थी। तेलंगाना में बने अस्त्र शस्त्रों की न केवल स्थानीय मांग थी, बल्कि ये अन्य राज्यों में भी बेचे जाते थे। भारत विश्व प्रसिद्ध स्टील की मिश्र धातु का जन्म स्थान है, जिसे वुड स्टील के नाम से जाना जाता है। इस प्रसिद्ध इस्पात की मिश्र धातु का आविष्कार तमिलनाडु में आज के कोडुमानल इरोड में किया गया था। दक्षिण भारत का वुड स्टील अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय लोगों द्वारा बनाए गए स्टील से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। वुड स्टील के उत्पादन के लिए लोहे की परिष्कृत करने की अत्यधिक विशिष्ट तकनीक की जरूरत होती है, जिससे धातु में कार्बन नैनोट्यूब बनते हैं। इस प्रकार यह जंगरोधी और तलवार बनाने के लिहाज से काफी लचीला होता है। उस समय का व्यापार जबरदस्त था और बहुत सी चीजें बनाई जा रही थी। यहाँ तक कि हमारी खुद की स्टील बनाने की प्रक्रिया भी थी, जिसे आप वुड्स कहते हैं। बेशक यह छोटे स्तर पर किया जाता था, लेकिन यह इतनी अच्छी गुणवत्ता का था कि इससे प्रसिद्ध दमिश्क प्लेट बनाए जाते थे, जिन्हें सीरिया को निर्यात किया जाता था। हमारा कपड़ा उद्योग भी बिल्कुल शानदार था। हमारे पास ढाका की मलमल थी, जिसे हम 18वीं शताब्दी से निर्यात कर रहे थे। कुल मिलाकर व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था। भारतीयों के पास ज्ञान था और वे परिष्कृत हथियार भी विकसित करने में सक्षम थे। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण टीपू सुल्तान का अग्निबाण या मैसूरियन रॉकेट है। मैसूरियन रॉकेट ऐसे भारतीय सैन्य हथियार थे जो लोहे के आवरण वाले पहले रॉकेट माने जाते हैं और इनकी सफलतापूर्वक तैनाती सैन्य उपयोग के लिए की गई थी। In 1792, Tipu Sultan, when there was a 1792 में जब टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई, तो उन्होंने पहली बार उड़ते हुए अपनी बाण को देखा। वे तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भारतीयों के हाथ में ऐसा हथियार भी होगा, और उन्होंने भी इन चीजों पर काम करना शुरू किया। टीपू उन्हें इन हथियारों के दम पर हरा सकते थे। अंग्रेजों ने इन हथियारों को हासिल किया और उन्हें इंग्लैंड ले गए, जहां इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग की गई और रॉकेट तकनीक में उत्कृष्टता प्राप्त की गई। इसका उन्होंने वास्तव में उल्लेख किया है कि यह सब ज्ञान उन्हें भारत से मिला। technology. And they have rightfully mentioned that all this knowledge came to us from India. So many such things are there in the pages of history. So we need to explore such things. भारत का औपनिवेशिक इतिहास ब्रिटिश औद्योगिकरण के इतिहास से जुड़ा हुआ है। वास्तव में विजय अभियान, उपनिवेशवाद और यूरोपीय औद्योगिकरण आपस में गहराई से जुड़े हुए थे। इसलिए भारत कपास, रेशम, इंडिगो डाई, नमक, मसाले, चाय और अफीम जैसे बुनियादी कच्चे माल का एक समृद्ध स्रोत बन गया। इसी के साथ वो ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं के एक विशाल बाजार में भी बदल गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापारी बनकर आए अंग्रेजों का उपनिवेशवादियों में बदलना मोटे तौर पर 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अंग्रेजों के उदय ने भारत की स्वदेशी ज्ञान प्रणाली में समृद्ध विरासत को व्यवस्थित तरीके से हाशिए पर पहुंचा दिया। उदाहरण के लिए भारत के पास इस पूरे उपमहाद्वीप में उद्योग थे और कपड़ा क्षेत्र की समृद्ध जानकारी थी। वास्तव में भारत कपास उत्पादन का जन्म स्थान है। 1750 के आसपास अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प्राप्त करने से ठीक पहले भारत दुनिया भर में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक था और ये देश अपने उत्कृष्ट गुणवत्ता और उत्कृष्ट शिल्प कौशल के लिए जाना जाता था। भारतीय कपड़े का बड़े पैमाने पर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि जावा, सुमात्रा और पेनांग में व्यापार किया जाता था। मजेदार बात यह है कि 1680 के दशक से भारतीय सूती छपाईदार कपड़ों का, खासकर अपने उत्कृष्ट फूलों के डिजाइन, अतुलनीय गुणवत्ता, बढ़िया बनावट और कम दामों के लिए इंग्लैंड और यूरोप में बेहद जुनून था। इंग्लैंड के अमीरों, कुलीन वर्ग और यहाँ तक कि वहां की रानी ने भी उस दौरान भारतीय वस्त्रों का उपयोग किया था। उस समय के कुछ प्रसिद्ध भारतीय कपड़ों में भारतीय छींकदार कपड़ा, ढाका की मलमल, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले कश्मीरी शॉल जैसे कि चमावार, पश्मीना, शहतूत और कानी शॉल शामिल हैं। ये भी कहा जाता है कि नेपोलियन ने अपनी पत्नी महारानी जोसेफिन को प्रभावित करने के लिए उन्हें एक अच्छी गुणवत्ता वाली कश्मीरी शॉल उपहार में दिया था।
अंग्रेजों के भारत पर कब्जा करने के बाद यहाँ उद्योगों और शिल्पकला ने अपना संरक्षण खोना शुरू कर दिया और इसके बाद भारतीय उद्योगों के गैर औद्योगिकरण की प्रक्रिया हुई। ये ब्रिटिश उत्पादों की बिक्री के लिए जगह बनाने की एक सोची समझी रणनीति थी। 1757 में प्लासी की लड़ाई और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों ने पूरे देश को अपने अधीन करने का फैसला किया। अंग्रेज अपने साथ ताकतवर सांस्कृतिक शक्ति भी लाए थे जो वर्षों तक भारतीय या स्वदेशी माने जाने वाली हर चीज को प्रभावित करती रही। औपनिवेशिक शक्ति ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों के शोधन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग किया। इसके लिए भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जैसे कई अन्य सर्वेक्षण भी किए गए। इसी मकसद से उन्होंने 1767 में भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना की। पहले सर्वेक्षण का उद्देश्य बंगाल के पहले सर्वेयर जनरल मेजर जेम्स रेले की देखरेख में एक व्यापक भौगोलिक सर्वेक्षण करना था। They are supposed to start a systematic study of nature. वे इस भूमि के प्राकृतिक संसाधनों का एक व्यवस्थित अध्ययन शुरू करने वाले थे। इसलिए इस विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1767 में भारत का सर्वेक्षण शुरू किया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने एक बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इस भूमि के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन शुरू किया। इस तरह उन्होंने इस भूमि के खनिजों और कई अन्य चीजों का अध्ययन करना शुरू किया। वे भारत के सर्वेक्षण के माध्यम से इस देश की फसल पैटर्न का नक्शा भी बना सकते थे और इस देश के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करने के इस व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ वे इस देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या लूट सकते थे। तो भारत में तो ये लूट एक वैज्ञानिक गतिविधि के रूप में शुरू हुई थी। All these natural resources with great magnitude. दूसरा सर्वेक्षण भारत के प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना था और इसके कारण 1851 में जीएसआई यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का गठन हुआ। सर्वेक्षण के तुरंत बाद अंग्रेजों ने देश में रेलवे लाइनें बिछाना शुरू कर दिया। इस पहल के पीछे सोच थी देश पर ब्रिटेन की पकड़ को मजबूत करना और ग्रामीण इलाकों में संसाधनों का दोहन करना। भारत का पहला रेलवे प्रस्ताव 1832 में मद्रास में किया गया था। रेड हिल रेलवे देश की पहली ट्रेन 1837 में मद्रास में रेड हिल से चिंता द्वीपेट पुल तक चली थी। इसे विलियम एवरी द्वारा निर्मित एक रोटरी स्टीम इंजन लोकोमोटिव द्वारा खींचा गया था। आर्थर कॉटन द्वारा निर्मित रेलवे का उपयोग मुख्य रूप से मद्रास में सड़क निर्माण के लिए लेटराइट पत्थर की ढुलाई के लिए किया जाता था। ये अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और सैन्य अड्डा था। संयोग से भारत में पहली यात्री रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 से बोरीबंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच लगभग 32 किलोमीटर तक चलने लगी थी। They started using. उन्होंने हमारे देश का शोषण करने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया। पहला उदाहरण रेलवे है। यदि आप हमारे देश के रेलवे नेटवर्क को देखें तो उन दिनों यह भारत के लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा के लिए नहीं था, बल्कि विशेष रूप से इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को एकत्र कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना था। जैसे कि बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे इंग्लैंड के लिए निकटतम बंदरगाह था, नियरेस्ट पोर्ट फॉर इंग्लैंड। अंग्रेजों द्वारा शोषण केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये आर्थिक क्षेत्रों तक भी फैला हुआ था। जब देश के संसाधनों का लाभ उठाने की बात आई तो कृषि ब्रिटिश एजेंडे में सबसे ऊपर थी। ये अंग्रेजों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत और ब्रिटिश औद्योगिक क्षेत्र के लिए कच्चे माल का मुख्य जरिया बन गई। वास्तव में उपनिवेशों को ब्रिटेन में वृक्षारोपण यानी निवेश के रूप में जाना जाता था। इस दिशा में अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए कई
जहाँ से चलिए कल ठीक है। A very good morning, everyone. As we celebrate the 75th year of India's independence, that is AZADI Ka Amrit Mahotsav, it becomes essential to have a planned India program to showcase science and technology innovation from every part of our country. Vigyan Sarvatra Pujyate means science and technology traveled all over. Is a week-long celebration during 22nd, 28th February 2022 from 75 locations in India. In this series today, we are celebrating the third day of Science Week with the theme Modern Science and Technology Milestones. I'm truly honored to have the pleasure of welcoming the distinguished gathering for the Science Week celebration under theme Vigyan Sarvatra Pujyate. I extend a very warm welcome to our Joint Member Secretary, Sri Satpal Himanji. On behalf of HIMCOSTE and on my own behalf, I warmly and respectfully welcome our speakers for the today's session, Dr. Mahavir Khachi, Department of Physics, Himachal Pradesh University, Shimla, and Professor S. Kamar, Department of Biotechnology, Himachal Pradesh University, Shimla. And my word of welcome goes next to all the invitees, teachers, and the vibrant students from colleges of Shimla town. While taking the program forward, I request Sri Satpal Himanji to honor Dr. Mahavir Khachi with a cap and a muffler. Please give a huge round of applause for him. Thank you very much. I again request, sir. Thank you very much. I again request, sir, to honor Dr. S. Kamar with a cap and a muffler. Thank you very much. We will start the session with first presentation by Dr. Mahavir Khachi, Department of Physics, Himachal Pradesh University, Shimla. A brief introduction of our first speaker. Dr. Mahavir Khachi has done his PhD from India Institute of Technology, New Delhi, in collaboration with Himachal Pradesh University. His key research areas are fabrication and characterization of ferroelectric, ferromagnetic, multiferroic BMS, and magnetic nanomaterials. He is among
top 2% world scientists at the Stanford University List 2021. He has served in areas such as course administration, curriculum development, examination arrangements, supervisory duties, and finance management, etc. He has published more than 300 research papers in national and international journals. He has given his services to formulate different academic programs such as Inspire Camp, PhD, and MPhil programs, and international conferences, etc. It gives me great pleasure to welcome our first speaker, Dr. Mahavir Khachi, who will speak on the topic Issues and Challenges in Present Nanotechnology. Please give a huge round of applause for Dr. Mahavir. Morning to all of you. First of all, my sincere thanks and gratitude to our science and technology department, especially Satpalji and his entire team. Thank you, sir, for giving me the opportunity. As Madam mentioned that I am associated with Inspire program last 15 years. So I have covered almost every innovative program under the banner of science and technology. So today, I will just give the flavors of nanotechnology. क्योंकि हाँ मैक्सिमम जो मुझे बताया गया है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज का मेरा मैसेज क्या है, इसमें आप अपना कैरियर कैसे बिल्डअप कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, जिस तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द बैनर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इसका मेन पर्पज है, तो मैं कोशिश करूंगा एक मैसेज देने की कि नैनो टेक्नोलॉजी क्यों आज की डेट में इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें चैलेंजेस है और क्या क्या इसमें इश्यूज है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम तो कई बार ये रहता है कि नैनो टेक्नोलॉजी और ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है। पहले तो ये थोड़ा समझना जरूरी है कि जैसे एक ऑर्डिनरी कपड़ा है और एक नैनो फैब्रिक्स है, इसमें क्या अंतर है। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि स्केल का फर्क होता है। जो स्मॉलेस्ट जो ग्रेन होता है या क्रिस्टल होता है, जो सबसे छोटा, अगर वो 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में होता है, नैनो का मतलब है 10⁻⁹, अगर उस रेंज में होता है तो उसको हम नैनो मटेरियल कहते हैं। आज से अगर 15 साल पहले देखें तो ऑर्डिनरी मटेरियल होता था जिसका साइज होता था माइक्रोन। ऑर्डिनरी जो अभी तक जो भी, चाहे वो डिस्टेंपर है, चाहे सीमेंट है, चाहे फूड सप्लीमेंट्स है, जो भी प्रोडक्ट्स है जो हमारे चारों तरफ है, वो आज से 15 साल पहले ऑर्डिनरी मटेरियल का मतलब जिसका साइज होता था माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब है 10⁻⁶ मीटर। इसको हम ऐसे समझते, सबसे जो छोटा कण है, सबसे छोटा कण है, जैसे पाउडर बनाते हैं आप, जैसे घरों में नमक को हम पीसते हैं, उसका जो सबसे छोटा कण है, अगर उसका साइज 10⁻⁶ मीटर है तो वो ऑर्डिनरी नमक है। अगर उस नमक को मैं और पीसूं, उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अगर उसका सबसे छोटा कण अगर 10⁻⁹ मीटर का होगा तो उसको हम नैनो नमक कहेंगे। अब हुआ क्या है इसमें, जब हम ऑर्डिनरी नमक से नैनो के नमक में गए, बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाती है, ड्रास्टिक चेंज, बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाती है। नैनो मटेरियल इज एक्सट्राऑर्डिनरी, इट चेंज द एंटायर वर्ल्ड।
drastically. That is why all over world 80 to 90% budget of R&D is spent on this nanotechnology, because it enters in every sphere of life, whether it is defense sector, whether it is electronic sector, whether it is medical sector, whether it is food sector, agriculture sector. It covers almost entire sphere of life. तो वो क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज हो जाता है, तो इसको मैं ऐसे बताना चाहता हूं, अगर ऑर्डिनरी मटेरियल है, जो ऑर्डिनरी पाउडर है, ऑर्डिनरी डिस्टेंपर जो घरों में करते हैं, जो डिस्टेंपर अभी भी करते हैं त्योहारों के आसपास, अगर वो ऑर्डिनरी है तो वो 5-7 साल के बाद उसको दोबारा करना पड़ता है क्योंकि झड़ जाता है। लेकिन वही पेंट अगर नैनो होगा तो 1000 साल तक नहीं निकलेगा। एक बार अगर आप उसको लगा लोगे दीवार में तो वो परमानेंट है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आ क्यों नहीं रहा ये मार्केट में? इसमें कुछ चैलेंजेस है। सड़कों में नैनो सीमेंट क्यों नहीं हम डाल रहे, ताकि बार बार क्यों करते हम टायरिंग? एक बार कर दो, परमानेंट हो जाएगा। फिर चैलेंजेस है, वो चैलेंज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। 3 साल पहले मैं डीयू में एक लेक्चर दे रहा था, सतपाल जी, एक गौर करने वाली बात है। वहां पर एक पंजाब के स्कॉलर थे हु केम फ्रॉम यूएस। ये कहा गया कि रामायण के अंदर जब सीता रामचंद्र जो वनवास में गए तो अनसुईया ने जो फैब्रिक दिए थे वो किस टेक्नोलॉजी के थे? क्योंकि वो 14 साल वनवास में रहे, उनके पास जंगल में धोने का साधन नहीं था। इस कमरे में टेक्नोलॉजी उस टाइम भी थी। वो कौन से फैब्रिक थे? आज भी नैनो फैब्रिक की बात होती है, विच इज डस्ट फ्री। इसको ना कोई टेक्नोलॉजी होती थी, ये आज की नहीं है टेक्नोलॉजी। और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, जो फिश होती है, फिश मछली, इसकी जो स्किन होती है, इट इज फुल ऑफ नैनो पार्टिकल, इट इज फुल ऑफ नैनो पार्टिकल, और वो मैग्नेटिक होती है। इसलिए मछली कैसे समुद्र के अंदर हजारों किलोमीटर ट्रेवल करती है, उसको कैसे पता कि मुझे बॉम्बे जाना है? अगर यूएस से कोई फिश बॉम्बे आ रही है तो कुछ न कुछ तो नेचुरल उसके ऊपर नेविगेशन है, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज की नहीं है टेक्नोलॉजी, ये तो जब पृथ्वी बनी होगी तब से ये नाम दे दिया हमने आज नैनो। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ऑर्डिनरी में जो ऑर्डिनरी मटेरियल है उसका साइज जो माइक्रोन था, उसमें सरफेस साइलेंट होता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं बच्चों। जो ऑर्डिनरी मटेरियल है उसका सरफेस साइलेंट होता है। सरफेस किसको कहते हैं? ऊपर से नीचे तक 10 एटम्स की लेयर, 10 टॉप एटॉमिक लेयर्स को हम सरफेस कहते हैं। जैसे ये सरफेस है, तो अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। जो 10 टॉप लेयर्स है उसको हम सरफेस कहते हैं। तो जो ऑर्डिनरी मटेरियल का जो सरफेस है वो साइलेंट होता है, जबकि नैनो मटेरियल का जो सरफेस है वो सुपर एक्टिव होता है। सुपर एक्टिव हो जाता है नैनो मटेरियल का सरफेस। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आने वाले समय में सरफेस इंजीनियरिंग का जमाना होगा। आजकल आप देखते होंगे जब इंजीनियरिंग की बात होती है, इट इज द ओनली वन एरिया जिसमें आज की डेट में कैरियर है, दैट इज बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर साइंस क्यों आज की डेट में इंपॉर्टेंट है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस सरफेस इंजीनियरिंग, इट इज बिकॉज ऑफ दिस नैनो टेक्नोलॉजी, बिकॉज सरफेस इज इंपॉर्टेंट। इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इसमें सरफेस इंपॉर्टेंट है। सरफेस कब इंपॉर्टेंट होता है? व्हेन वी गोज अप टू नैनो लेवल, जब हम सूक्ष्म लेवल में चले जाते हैं, वहां पर सरफेस सुपर एक्टिव हो जाता है। It is so super active. That is why it changed drastically the ordinary material into nanomaterial. इसीलिए अगर आप डिस्टेंपर नैनो बेस होगा तो वो परमानेंटली चिपक जाएगा हजारों साल तक। अगर आप नैनो का कोट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, खरीदने की जरूरत ही नहीं है, दैट विल बी डस्ट फ्री। लेकिन क्वेश्चन ये फिर है क्यों नहीं है मार्केट में? 2000 का चैलेंजेस जो मैं डिस्कस करूंगा, फिर ये मार्केट में क्यों नहीं आ रही है? इसको कुछ न कुछ सीरियस कंसर्न है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और दूसरा, हमारे प्रोफेसर कंवर साहब, माय फ्रेंड हु विल आल्सो डिलीवर नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर है, रिनाउंड प्रोफेसर। मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम नैनो साइंस की बात करते हैं
जब हम नैनो साइंस की बात करते हैं, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या सोशल साइंस कोई मीनिंगलेस है। इट इज वन साइंस जो कि सबको इकट्ठा कर देती है। तब फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रहती है, बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, इट इज वन साइंस जो कि सबको इकट्ठा कर देती है। वहां पर फिर एक साइंस की नहीं चलेगी, इट इज ए वन साइंस which is merger of every sciences। इवन सोशल साइंस भी उसमें आती है, मेडिकल भी उसमें आती है, इंजीनियरिंग भी उसमें आती है। इट इज ए वन साइंस। अब वो जमाना चले गया फिजिक्स केमिस्ट्री और ऑर्डिनरी लेवल, वो नहीं होगा। इट इज वन साइंस जहां पर आपका जो फिजिक्स है, जब ऐसे फिजिक्स की हम बात करते हैं विच इज ए मदर ऑफ ऑल साइंसेस, तो क्वांटम फिजिक्स की बात होती है। क्वांटम का मतलब क्या है? सूक्ष्म जगत। क्लासिकल फिर चेंज हो जाता है। तो जो हम गांव में भी कहते हैं पीपल के पेड़ में यहाँ भूत है, वो भूत कुछ नहीं है, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। वो दिखता नहीं है। अगर मैं नजदीक से देखूंगा किसी भी चीज को, आप देखते रहो, तो सूक्ष्म 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 जब काम कहां पहुंचते हैं, जब आप अणु और परमाणु के लेवल पर पहुंचते हैं, तो वहां क्वांटम फिजिक्स आ जाती है। ऑर्डिनरी कंसेप्ट आपके फेल हो जाते हैं। इसलिए अभी टेक्स्ट बुक भी चेंज होगी, क्योंकि सारी थ्योरी वहां चेंज हो जाती है। इसलिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो क्वांटम एंटेंगलमेंट और जो बिग डेटा की आज की डेट में बात हो रही है, बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाली है, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है। और उसमें मैं ये कहना चाहता हूं, आपने देखा भी होगा जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे, अगर आपने एक पहाड़ी को क्रॉस करना है, सपोज आप बेस में बैठे, पहाड़ी जो है 1000 किलोमीटर है, तो एक तरीका तो ये कि हमें अगर क्रॉस कर दूसरी साइड जाना तो हमें पहाड़ी क्रॉस करनी पड़ेगी। लेकिन फिजिक्स ये कहती है अगर आप सूक्ष्म लेवल पर जाएंगे तो आप विदाउट क्रॉस किए हुए भी पहली साइड जा सकते हैं, जिसको टनलिंग कहते हैं। तो यहां मैं स्पिरिचुअलिज्म को भी जोड़ना चाहता हूं कि जो योग में कहते हैं, जो बड़े बड़े सेंट है, अब सेंट में मॉडर्न सेंट की बात नहीं है, मैं चाहे नानक और कबीर की है कि एक ओंकार, जब आप उस सूक्ष्म लेवल पर पहुंच जाते हैं यू कैन पेनिट्रेट एनीवेयर, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एटम्स कैन पेनिट्रेट, क्योंकि उस नैनो लेवल पर आप एटम और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर आ जाते हैं। आजकल तो हम कंप्यूटर मॉलिक्यूलर बेस बना रहे हैं। जब एक नैनोमीटर की बात कर रहा हूं, एक नैनोमीटर में कितने एटम होते हैं? रफली 10 एटम। अभी सिंगल एटम की बात नहीं हुई है, अभी तो हम बात कर रहे हैं 10 एटम की। एक नैनोमीटर में 10 एटम है। तो नैनो मटेरियल का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जितने आप सूक्ष्म होते जाओगे उतना ब्यूटीफुल है। सूक्ष्म जगत इज ब्यूटीफुल और एक ठहराव आ जाता है। जब आप स्पिरिचुअलिज्म में भी जो आप बोलते हैं कि मेडिटेशन आजकल काफी पॉपुलर है, मेडिटेशन करनी चाहिए हर एक को, उसका मतलब क्या है? अपने आप को जानना सूक्ष्म लेवल पर। तो मटीरियल को तो हम जान रहे हैं। देखो मटीरियल को अगर आपने सूक्ष्म लेवल में देखना तो कैसे देखोगे आप? माइक्रोस्कोप से। हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक IIT चेन्नई में लगा जो 34 करोड़ का है, जिसमें भी आप हर एक एटम की दुनिया देख सकते हैं। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जब हम एटम के लेवल पर चले जाते हैं हम सब एक है, क्योंकि एटम तो सब हमारे कॉमन है। ये तो डिफरेंट हम क्लासिकल लेवल पर हमारी जो शक्लों पर हम देख रहे हैं, अगर आप सूक्ष्म लेवल देखोगे तो वी आर वन, क्योंकि हम सब एटम के बने हुए हैं। So at this level, when we talk about the material technology at nano level, और मैं कोर की बात कर रहा हूँ, तो फिर मटेरियल सेम हो जाता है। इसके ऊपर मैं थोड़ा चर्चा करूंगा और ये अच्छी फील्ड है। और मैं यहाँ ये सोशल साइंस के जो हमारे प्रोफेसर साहिब आ रहे हैं उनको भी इनवाइट करता हूँ, they can also enter in this field. This is a fascinating field. Everybody can work together. और मैं यहाँ एक चीज कहना चाहता हूँ, जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, चाहे मेरा यूरोप का, यूएस का या साउथ एशिया का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअली आज की डेट में रिसर्च नहीं हो सकती है। वो वक्त चले गए जब कोई अकेला अपने पढ़ता रहता। आज आपको कोलैबोरेशन करनी ही पड़ेगी। अगर आपको समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो आपको बच्चों का कोलैबोरेट करना पड़ेगा विद डिफरेंट एरिया। अकेले नहीं आप कर सकते, आपको टीम के तहत ही वर्क करना पड़ेगा। कैन यू बिलीव आई हैव स्ट्रांग कोलैबोरेशन विद प्रोफेसर कावा? वी आर वर्किंग टुगेदर। I am a man of physics, he is a man of biotechnology, but we are working together. That is the beauty of this nanoscience. तो इसलिए this is interesting field.
लेकिन कुछ चैलेंजेस है जो कि मैं आपको बताऊंगा, सो यू कैन वर्क। वो चाहे आप इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहते हैं, चाहे मेडिकल की साइंस साइड, चाहे अप्लाइड साइंस में, कहीं भी आप जो एंटर करते हैं, सो इट इज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट प्लीज। तो ये मैंने बता दिया 1 से 100 नैनोमीटर। नेक्स्ट देखिए, सब चाहते हैं कि नैनो साइकिल कैसी हो, लाइटर हो, स्ट्रॉन्गर हो, फास्टर हो, स्मॉलर हो, ड्यूरेबल हो, हम सब चाहते हैं। तो फिर आ क्यों नहीं रही है, इशू क्या है? नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट एटम्स का मैंने बता दिया, ये साइज है अलग अलग रेंज के जो भी है, नैनो स्मॉल, जितना आप स्मॉल होते जाते हैं वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट ये कंपेयर कर दिया हमारे जो सिर के बाल से कितना लाख टाइम छोटा होता है नैनो पार्टिकल। नेक्स्ट प्लीज। देखिए अब नैनो टेक्नोलॉजी कितने एरिया में एंटर कर रही है। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां ये एंटर नहीं की हुई टेक्नोलॉजी। इट कवर ऑलमोस्ट एवरी एरिया, कोई भी जो ब्रांच है। तो फिर इसमें चैलेंजेस क्या है? नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट ये इश्यूज है। सबसे बड़ा है टॉक्सिसिटी, विषैला हो जाता है सूक्ष्म, वो डिस्टेंपर इसलिए नहीं आ रहा, वो विषैला हो जाता है। अब ये रिसर्च का विषय तो उसको विषैलेपन को हटाना है, क्योंकि जब आप सूक्ष्म हो जाते हैं तो विषैले भी हो जाते हैं। तभी तो बोला कि डेंजरस भी तो है, इतना थोड़ी है जो योग में कहा गया है। इसमें तब तो सबने करनी थी मेडिटेशन, मटेरियल में भी ऐसा है, वो खतरा तो है ही है। आप जब सूक्ष्म लेवल पर जब हम देखते हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो रेयर है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी, इट बिकम टॉक्सिक, विषैला हो जाता है। तो अब सड़क में अगर सीमेंट आपने नैनो का डाल दिया तो अगर विषैला होगा तो सब कोलैप्स हो जाएंगे। दैट इज द पॉइंट, मटेरियल कैन बिकम टॉक्सिक एट नैनो लेवल। तो ये इश्यू। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं बात करूंगा उस एरिया की जो विषैला नहीं है इवन एट सूक्ष्म लेवल। तो समुद्र को मैंने छोड़ दिया, नैनो मटेरियल समुद्र था, मैं उस समुद्र में से एक छोटा एरिया कर रहा हूं, दैट इज मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी। डियर फ्रेंड्स, मैग्नेटिक मटेरियल सूक्ष्म लेवल में भी प्योर ही रहता है, विषैलापन नहीं रहता। तो अब समझो, नैनो मटेरियल कैन बिकम डेंजरस बिकॉज ऑफ टॉक्सिक, विषैलेपन की वजह से। अब नैनो की नहीं, मैं नैनो में से मैंने एक छोटा एरिया लिया, मैग्नेटिक नैनो। मैग्नेटिक नैनो की खासियत ये है कि ये प्योर ही रहता है, नॉन टॉक्सिक रहता है इवन एट नैनो लेवल। और दूसरा, नैनो पोल्यूशन भी करता है, पर मैग्नेटिक नैनो पोल्यूशन फ्री है और बायोडिग्रेडेबल है। मैग्नेटिक नैनो इज बायोडिग्रेडेबल। तो अब मैं बात एक सब एरिया की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी, एंड आई एम फॉर्चुनेट, आई एम वर्किंग ऑन दिस मैग्नेटिक मटेरियल लास्ट 30 years. I started my research career from IIT Delhi. So till now I am working on the magnetic. लेकिन वो वक्त होता था ऑर्डिनरी मैग्नेटिक का, आज हम वर्क कर रहे हैं मैग्नेटिक नैनो का। अच्छी बात ये है कि मैग्नेटिक मटेरियल इज सेफ एट नैनो लेवल और बल्क लेवल। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं, कैंसर का है ट्रीटमेंट जो कीमो हम अभी देते हैं, मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी से कैंसर कैन बी क्योर्ड विद 0% साइड इफेक्ट, जबकि कीमो का 70 से 80% होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी। जो हाइपरथर्मिया टेक्निक है उससे कैंसर मल्टी टाइप्स होता है, एक्सपर्ट इज हियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। कैंसर इज ऑफ मल्टी टाइप, बट देयर आर फ्यू कैंसर which can be cured with 0% side effect using this magnetic nanotechnology. तो मेडिकल साइड में इस मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज है। मैं अब यहाँ जो डेटा रख रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटल है, मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंटल है, कोई गप नहीं अब मारूंगा, जो बातें रखूंगा यहाँ वो स्पष्ट है, वो क्लियर है, उसके एक्सपेरिमेंटल आधार है, वो गपों पर नहीं आधार, वो थ्योरेटिकल नहीं है। These are all experimental evidence supported by nature reports and other reported journals. उसके बेस पर आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा जो कि ये मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है, वो चाहे हेल्थ सेक्टर है, चाहे कम्युनिकेशन है, चाहे साफ पानी है। पानी का शिमला शहर में आपको मालूम होगा 2008 में यहाँ इतना ज्यादा केस हो गए थे पानी का, क्योंकि जॉन्डिस के केसेस हो गए थे। So I was the one of the expert
नॉमिनेटेड बाय हिमाचल हाई कोर्ट, आई वाज द मेंबर। तो यहाँ कुछ इशू हो गए थे, उसको भी हम इस नैनो टेक्नोलॉजी से ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, दिस मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल आर इको फ्रेंडली, बायोकम्पैटिबल एंड नॉन टॉक्सिक। सबसे बड़ी बात ये सेफ है ये टेक्नोलॉजी, इससे कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। अब आप देखिए, ये आज से 15 साल पहले होता था, ये ऑर्डिनरी मैग्नेटिक है, ये नैनो मैग्नेटिक है, तो कोई तो खास बात हुई है। इसका मतलब इसकी शेप चेंज हो जाती है, इसकी सरफेस मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। और मैं यहां ये कहना चाहता हूं, क्यों हो जाता है नॉन टॉक्सिक मैग्नेटिक जबकि दूसरे नहीं होते? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर एक खास बात है, इसके सरफेस मॉर्फोलॉजी इतनी रिफाइंड हो जाती है, इतने कंट्रोल्ड हो जाती है, जिससे कि हम इसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्लीज। ये एप्लीकेशन है, वो थी नैनो की एप्लीकेशन, लेकिन उसमें खतरा था, इसमें कोई खतरा नहीं है। तो इसकी एप्लीकेशन अभी देखो कितनी है। स्पिंट्रॉनिक्स, बच्चों स्पिंट्रॉनिक्स आज एटलीस्ट इसको आप सीख के जाओ। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं अब कोई बोलता, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे तो आप ओल्ड फैशन है, ये न्यू फैशन है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह स्पिंट्रॉनिक्स ने ले ली है। जो आप घरों में अब रेफ्रिजरेटर या टेलीविजन लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, अब उसमें अब स्पिंट्रॉनिक्स है। अब ये स्पिंट्रॉनिक्स क्या है? स्पिन आपने सुना होगा, आपने इलेक्ट्रॉन का नाम तो सुना होगा। इलेक्ट्रॉन जो घूमता है साथ में उसकी स्पिन भी होती है। अब स्पिन इलेक्ट्रॉन का सूक्ष्म पार्ट है, इसको ऐसे समझो। इलेक्ट्रॉन बड़ा है, उसका सूक्ष्म रूप स्पिन है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्म लेवल पर चले गए हैं, जिसको हम स्पिंट्रॉनिक्स कहते हैं। परसों में एक इनवाइटेड टॉक दे रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर जो कीनोट स्पीकर थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, ही डेमोन्स्ट्रेटेड मैग्नेटिक नैनो रोबोट जो हार्ट को पंपिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं वो। तो इट्स सो इंपॉर्टेंट दिस एरिया। सबसे बड़ी बात है कि सेफ, ये सेफ है टेक्नोलॉजी। तो मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी, स्पिंट्रॉनिक्स, सारे सर्किट स्पिंट्रॉनिक्स है। अब क्वेश्चन ये कि स्पिंट्रॉनिक्स क्यों इतनी अच्छी है इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह? स्पिंट्रॉनिक्स की खासियत है कि ये हीट बहुत कम लेती है, और दूसरा है कि जैसे ही स्विच ऑन करोगे इमीडिएटली एक्शन आ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ टाइम लेती है और खराब भी नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक्स के तो खराब भी होते रहते हैं, इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा स्पिंट्रॉनिक्स की मोटे तौर पर। फिर बायोमेडिकल एप्लीकेशन है, जैसे मैंने कैंसर का बताया, दूसरा एक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। अगर मुझे सिर दर्द हो रही है तो सिर में डायरेक्ट क्यों नहीं ड्रग जा रही है, हम पूरे शरीर में क्यों डाल रहे हैं ड्रग? उससे नेचुरली साइड इफेक्ट भी होंगे। तो ऐसा होना चाहिए ना, कि सिर दर्द है तो डायरेक्ट ड्रग यहां डालें, दैट इज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। जहां दर्द है वहीं डालो ड्रग को, उससे डोज कम लगेगा, रिलीफ जल्दी होगा। सो वी कैन यूज दिस देयर। देन सेंसर, आज की डेट में सेंसर, बायो सेंसर की बात होती है। स्मार्ट सिटी स्मार्ट होम की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। यूरोप में कुछ स्मार्ट सिटीज है। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? जैसे गाड़ी, आजकल हर गाड़ी में देखो सेंसर लगे हैं। अब वो जमाना नहीं है कि ब्रेक ऑयल चेंज करो, चेक करो, सेंसर ही बता देगा आपको। आपने देखा भी होगा गाड़ियों में सेंसर बता देते कि कहां फॉल्ट है। तो घरों में भी अगर सेंसर लगा होगा, इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। घरों में मान लो मियां बीवी नौकरी पर चले गए, बुजुर्ग बेचारा अकेले बैठा हुआ है, भगवान ना करे कि उसको कोई हार्ट का इशू हो गया, वो गिर गया है, लेकिन वहां सेंसर लगा हुआ। सेंसर उसकी पल्स को डिटेक्ट कर लेगा और सेंसर हॉस्पिटल के साथ लिंक होता है, हॉस्पिटल उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। दूसरा एक होती है आईओटी टेक्नोलॉजी। उससे क्या होगा, जितने भी घरों के अंदर आपके सामान है वो मोबाइल में होते हैं। तो आप अपने ऑफिस से देख सकते हैं, मेरे टीवी ऑन तो नहीं रह गया घर में, तो आप देख सकते हैं, दैट इज आईओटी टेक्नोलॉजी। तो वो सारा सेंसर बेस है। सो सेंसर इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन तो मैंने बताया। देखिए आज हम याद करते हैं, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा वो साफ पानी के लिए होगा, स्वच्छ पानी के लिए। माय डियर, सिर्फ 3% है ग्लोबली स्वच्छ वाटर, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। अगर उसको भी हमने पोल्यूट कर दिया तो हम कहां जाएंगे साफ पानी के लिए? ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। तो इस मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी से हम स्वच्छ कर सकते हैं, पानी को प्योर कर सकते हैं। फिर कई बार मुझे कहते हैं कॉलेज के टीचर्स से भी, हमारे
जी हम तो आरओ लगा लेंगे। इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ मी और यू, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन पीपल, लेबर क्लास जो एक टैप से पानी पी रहा है, क्या उसको शुद्ध पानी मिल रहा है? इस टेक्नोलॉजी से आप पूरे टैंक को साफ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा होता है अगर बैक्टीरिया मिक्स हो गया है पानी में, दैट इज डेंजरस। तो आप इस टेक्नोलॉजी से बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं। तो पानी के लिए भी है। फिर कम्युनिकेशन, अभी इंडिया ने राफेल खरीदे हैं फ्रांस से, मुझे भी मौका मिला फ्रांस में उस लैब में काम करने का। उसमें जितना भी कम्युनिकेशन के जो उसमें सिस्टम लगा हुआ, इट इज बेस्ड अपॉन मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी। इसलिए मैं कह रहा हूं जो ये आई एम डूइंग ऑल दिस इन माय लैब विद कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी एज वेल एज टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन। तो उसमें भी कम्युनिकेशन। तो अब आप देखिए डेटा स्टोरेज, ये जो बिग डेटा की बात होती है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी सारे यहाँ है। तो आप देखिए नैनो भी मैंने छेड़ा, वो तो 100 से बड़े कितनी उसकी एप्लीकेशंस होगी। मैंने तो उसमें से समुद्र में से एक छोटा सा तालाब लिया, मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी, लेकिन उस तालाब की एक खासियत थी वो सेफ है। लेकिन उस तालाब से भी कितनी एप्लीकेशन है, आपका कंप्यूटर सारा इससे डिजाइन हो रहा है, सेंसर सारे इससे डिजाइन हो रहे, मेडिकल साइंस इससे डिजाइन हो रही, कम्युनिकेशन इससे डिजाइन हो रहा, पानी स्वच्छ इससे हो रहा है, और सेंसर सारे इससे हो रहे हैं। सो दिस इज आल्सो अनदर इंटरेस्टिंग एरिया। नेक्स्ट प्लीज। अब आप देखिए ये थोड़ा सा बच्चों, ये लीनियर व्यू है, आपको लीनियर व्यू छोड़ना पड़ेगा। भेड़ चाल हमें छोड़नी पड़ेगी। अगर एक कर रहा है इंजीनियरिंग हम भी चले यार, जो ये कर रहा वो बच्चों ही छोड़ना पड़ेगा आज इसमें। अगर आप नैनो की दुनिया में एंटर करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ थॉट रखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट सोच रखनी पड़ेगी। प्लीज अवॉइड लीनियर थिंकिंग। लीनियर का मतलब है कि समय के अनुसार चेंज, ये लीनियर आज की डेट में नहीं, आपको नॉन लीनियर होना पड़ेगा। नॉन लीनियर का मतलब है आपको डिफरेंट होना पड़ेगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हर इंसान के अंदर कोई नेचुरल टैलेंट है, यू एक्सप्लोर दैट टैलेंट। अवॉइड कि मेरी फ्रेंड वहां जा रही है तो मैं भी वहीं चलती, हो सकता है उसका अपना टैलेंट कहीं और हो, तो वो सोच थोड़ी। तो आप देखिए कैसे कैसे चेंजेस हुई है। नेक्स्ट 85 में क्या देखो एरोप्लेन आए। नेक्स्ट 1926 में देखो टेलीविजन आए, मार्कोनी के अंग्रेजों ने सबसे पहले देखे थे। उससे पहले तो कोई ये सोच नहीं सकता कि हम टीवी भी देख सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं। तो सारे चेंजेस हुई टेक्नोलॉजी की, ग्रेट मैक्सवेल की वजह से। नेक्स्ट प्लीज। देखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट आए 1957 में, आज दुनिया कितनी सिकुड़ गई है। आज देखो हम कितना मतलब जो है वर्ल्ड को कितना कंपैक्ट कर दिया, पहले कितना विशाल, आज कितना कंपैक्ट हो गया। नेक्स्ट प्लीज। 67 में देखिए कंप्यूटर और सेल फोन आए। मैं 90s में आईआईटी में हुआ करता था, पहला सुपर कंप्यूटर आया था इंडिया में आईआईटी दिल्ली के अंदर 90s में। तो लेकिन अब आप देखो जर्नी 1967 से हुई थी। नेक्स्ट प्लीज। 86 में वर्ल्ड वाइड वेब आया था। तो अब आप देखिए वेब कितना इंपॉर्टेंट है, सोशल आज की डेट में डिजिटल इंडिया का जो हम बात करते हैं, तो ये 86 जर्नी है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आप देखिए एज फॉर नैनो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेड डिस्ट्रक्टिव एंड वी आर ऑन द रोलर कोस्टर हेडिंग टुवर्ड डिक्लाइन। अब आप देखिए तो आपको चेंज थोड़ा। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए बिग स्टेप समय के अनुसार कैसे चेंजेस हुई। नेक्स्ट। अब आप देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आप देखो थोड़ा सा हमारे महिला साथी को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे कई बार मेरी वाइफ के साथ आर्गुमेंट होते हैं। हमारी एक सोच होती है इंडियन सिस्टम में, कोई खरीदा सर सामान तो 6 महीने तक तो वो खरीदना नहीं, लवारी में बंद करके रख लेते हैं। अवॉइड दिस, क्योंकि आज वो वक्त चले गया। पहले जो कंपनी बनाती थी 10 साल के लिए अपना प्रोडक्ट बनाती थी, क्यों? क्योंकि उसमें प्रोडक्ट जो है महंगा होता था। अब नहीं ऐसा। अब तो आज अगर कोई चीज लेते हैं 3 दिन बाद वो सस्ता होता है, उससे बढ़िया होता है। तो आज अगर आज खरीदते तो उसको यूज करो। अगर आप उसको लवारी में लॉक करके रखेंगे, जितने मैंने कहा है उतने में वो मार्केट में उससे बढ़िया है, उससे सस्ता है। क्यों? क्योंकि अब डिकेड का बात नहीं रही है। हर कंपनी ये सोच रही थी साल में मेरा प्रोडक्ट चलना कि नहीं, क्योंकि पहले कंपनी सोचती थी डिकेड का कि मेरा सस्टेन करेगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्लीज। अब तो ईयर्स की है। अब देखिए नॉन लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, आपको नॉन लीनियर होना पड़ेगा।
जितनी भी बड़ी डिस्कवरी होगी वो नॉन लीनियर होगी। जो भी समाज में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता है तो वो नॉन लीनियर होता है। मतलब क्यों कहते हैं यार वो अलग है बंदा। तो आज की डेट में तो सबको अलग होना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। नेक्स्ट प्लीज। अब आप देखिए ऐसा भी समय आएगा, ऐसा भी समय आएगा, दिस इज इंटरेस्टिंग, अगर इकोनॉमिक्स के हमारे कोई साथी है, अगर सुबह प्रोडक्ट होगा और शाम को दूसरा प्रोडक्ट होगा, मतलब सुबह मोबाइल आप गए खरीदने, शाम को आप अपने फ्रेंड के साथ गए दूसरे, शाम को वो मोबाइल था ही नहीं, वहां तो दूसरा था जो उससे बढ़िया तो उससे सस्ता था, तो जो दिखाने ले गया वही फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने सुबह धो लिया, मैं भी शाम को लेता। क्वेश्चन ये है कि अगर प्रोडक्ट इतना फास्ट चेंज होगा तो डिमांड और सप्लाई का क्या होगा, वो इतना प्रोडक्ट जाएगा ना, उससे पोल्यूशन का खतरा होगा। तो इसमें इकोनॉमिक्स का भी इशू है। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ इस टेक्नोलॉजी में सबको वर्क टुगेदर करना पड़ेगा, समाज का इशू है, सोशल इंबैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आ रही है फास्ट, टेक्नोलॉजी ने तो नया प्रोडक्ट देना है जो कि सस्ता होना है, जो कि इमीडिएट होना है, और सोसाइटी किस तरफ भागेगी, जहां उसको सस्ता मिलेगा, जहां उसको बढ़िया मिलेगा और वो सस्ता अवेलेबल है। तो क्वेश्चन ये कि ये इतना ज्यादा कैसे उसकी रिसाइकलिंग होगी, कैसे वो मूव करेगा, इकोनॉमिक्स के लोगों को ये आंसर उनके पास ही। नेक्स्ट प्लीज। तो ये 25 के बाद इस तरह की प्रेडिक्शन है। तो ये देखिए नैनो टेक्नोलॉजी ने सब कुछ ही चेंज कर दिया। पहले जो एक लीनियर चल रहा था, नैनो टेक्नोलॉजी सब कुछ छोड़ के रख दिया, इसने सब थॉट चेंज कर दी। तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। दिस इज ए न्यू, वी आर एंटरिंग इन द न्यू काइंड ऑफ एरा, जहां पर इतना ज्यादा आज की डेट में कैन यू बिलीव कि मतलब कंप्यूटर साइंस में इतने ज्यादा मतलब चेंजेस आ रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग में इतनी ज्यादा चेंजेस आ रही है जो कि समझ से परे हो जाता है। आज की डेट में तो इवन हैकिंग की बात हो रही है, इंसान के दिमाग को हैक कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आप तो उसकी बात हो रही है, एक्सपेरिमेंटली कह रहे हैं। तो दैट इज द चैलेंज एट दिस नैनो लेवल। उसका मतलब एक दूरगामी मतलब वो भी है। तो ये बहुत एक हम सब के लिए ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि इसको कैसे, क्योंकि इसने तो आना है, इसने तो अपना विकराल रूप करना ही करना है। तो हम इसके लिए तैयार है या नहीं? तो हमें पहले तो लीनियर सोच छोड़नी पड़ेगी कि हमने कंबल खरीदा तो एक साल तक तो खर्च नहीं करना, क्योंकि मेहमान आएंगे तो उनको कंबल देंगे। अरे मैं वाइफ को बोलता हूँ जब आएंगे तो तब मार्केट से ले लेंगे, एक तो सस्ता होगा तो खरीद लेंगे, वो हम दवाइयों में रख लेते लौट। तो मेरी थोड़ी सी ये है क्योंकि हम एक जो मिडिल क्लास के जो हमारी जो साइकिक है वो काइंडली हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें लीनियर सोच, ये जो ऑर्थोडॉक्स है या कई बार आप मतलब अंधविश्वास हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें बिलीव करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। तभी हम अच्छा डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो ये सारा फ्यूचर है मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल का। आज की डेट में देखो एमआरआई लेते हैं आप, एमआरआई कितना कम्पैक्ट हो गया, एमआरआई इतना सिंपल, आप खुद भी देख सकते हैं कि आपका डिफेक्ट कहां है बॉडी में। एक्सरे में तो फिर भी थोड़ा सा दिक्कत होती है एक्सरे को समझना, आजकल तो आप बॉडी में चेक कर सकते हैं कि मेरा फॉल्ट, एमआरआई लीजिए, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, जैसे मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी, इट इज सो सिंपल। तो ये हर इसमें चाहे वो कंप्यूटर साइड है चाहे बायोसेंसर की साइड है, उसमें बहुत ज्यादा यूज है इस टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट प्लीज। तो देखिए मैं जो बात कह रहा हूं, जो मैं पर्सनली इस वर्क एरिया में जुड़ा हूं, वो चाहे हेल्थ है, चाहे कम्युनिकेशन है, चाहे स्टोरेज है, चाहे एनवायरनमेंट है। हमने रोहतांग पास का भी सर किया था सर्वे, वहां पर टूरिस्ट आते थे, सारा वेस्ट फेंक लेते थे, ग्लेशियर पिघल रहे थे। वन ऑफ माय स्टूडेंट हु इज आल्सो प्रिंसिपल इन कॉलेज, ही डिड पीएचडी विद मी। हमने वहां का सर्वे हमने गवर्नमेंट को किया, उसके बाद वहां पर कमर्शियल व्हीकल को हमने कहा था कि सीएनजी व्हीकल होने चाहिए, क्योंकि जब ग्लेशियर रहेंगे तो हम सब सर्वाइव करेंगे, वाटर लेवल रहेगा, तो वहां का एनवायरनमेंट, वहां भी पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है जितनी पेट्रोल की या डीजल की गाड़ियां रोहतांग के आसपास। तो वहां का हमने सारा स्टडी किया था एरोसोल। तो एनवायरनमेंट के लिए भी इसको दिल्ली कहते थे कि आप सर्दियों में कितना पोल्यूशन हो जाता है, तो एनवायरनमेंट इज आल्सो लिंक्ड विद दिस। तो मैं फिजिक्स नहीं टच कर रहा हूं, इसके साथ फिजिक्स भी जुड़ी है, वो एक अलग विषय है क्योंकि यहाँ कॉमन हम सब है। मैं थोड़ा सा ऊपर से बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। अब आप देखिए यहाँ थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म मैंने जाना चाहता हूँ आपको। ये देखो ऑर्डिनरी दुनिया,
ये ऑर्डिनरी है, हम सब ऑर्डिनरी है क्लासिकल जब हम देख रहे हैं, लेकिन नोइंगली अननोइंगली जाना हम सब यहाँ करते हैं, जिसको कोर कहते हैं। वो कोर हमारे अंदर, ये बाहर नहीं, वो कोर अंदर ही है, और अंदर से हम मैग्नेटिक है सर। हमारा जो खून है ये भी मैग्नेटिक है, ये चुंबकीय है हमारा जो ब्लड है, लेकिन अभी तक ऐसा सेंसर नहीं बना मैग्नेटिक जो उस खून की मैग्नेटिक को सेंस कर सके। लेकिन कुछ रिसर्च इंगित कर रही है कि अब ब्लड की मैग्नेटिक सेंसिटिविटी को हम कर सकते हैं। जिस दिन वो हो जाएगा ना हेल्थ में, इतना सिंपल हो जाएगा डायग्नोस, क्योंकि अगर ब्लड को आप मैग्नेटिकली सेंस कर लेंगे, जैसे एमआरआई में आप करते हैं बॉडी को, जिस दिन ब्लड को मैग्नेटिकली सेंस करेंगे, इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस फॉर डॉक्टर्स। तो वो बेसिकली कहां होता है? जब हम यहां पहुंचते हैं, कोर में जब पहुंचते हैं, इसको कहते हैं सिंगल डोमेन पार्टिकल। तो मल्टी डोमेन से आप सिंगल में आ जाते हैं, जहां पर क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है। इट इज प्योरली क्वांटम, जिसको क्वांटम एंटेंगलमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिसको स्पिनट्रॉनिक्स कहते हैं, इसको कहते हैं सुपर पैरामैग्नेटिक। ये सुपर पैरामैग्नेटिक स्टेट होती है जो कि यूनिक है, जो कि यूनिक है। यहाँ के इंसान में भी ये होगी, अमेरिका के इंसान में भी। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, जो यहाँ का पानी है शिमला का और दिल्ली का पानी, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन पानी में आप बीएससी के स्टूडेंट है, पानी के एक ट्रिपल पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस जहां इकट्ठी हो जाती है एक जगह, वहां पर आप लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, गैस भी है। ट्रिपल पॉइंट अमेरिका के पानी का भी सेम है, इंडिया के पानी का भी सेम है, हिमाचल के पानी का भी सेम, कांगड़ा का पानी भी सेम है, शिमला का पानी भी सेम, ट्रिपल पॉइंट सेम है। जबकि पानी सेम नहीं है, ट्रिपल पॉइंट सेम है। ऐसे ही ये एसपीएम है, ये भी सबका सेम है। तो फिर हम क्यों नहीं इस बात को कहते हैं? इसका मतलब हमारे जो ओल्ड सेंट हुए वो क्यों कह रहे हैं एक ओंकार, वो इसी बात को कह रहे हैं। सूक्ष्म लेवल पर हम सब एक हैं, ये साइंस भी उस तरफ इंगित कर रही है। आप जब माइक्रोस्कोप से एटम को देखते हैं तो वहां पर एक स्टेज पर लगता है कि सारे मटेरियल को सिमिलर बिहेव कर रहे हैं उस सूक्ष्म लेवल पर, तो हम भी सूक्ष्म लेवल पर सिमिलर है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द बिहेवियर चेंजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी वर्ल्ड टू क्वांटम वर्ल्ड। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये सूक्ष्म जगत माइक्रोस्कोप से ऐसे दिखते हैं ये एटम्स, कितने यहाँ डिसऑर्डर है ही नहीं है। देखिए हम जो गुस्सा है, काम, क्रोध, लोभ, ये हम है तब है जब हम ऑर्डिनरी लेवल पर है। हम झगड़ रहे हैं, टेंशन में है, ये तब है जब ऑर्डिनरी। अगर आप सूक्ष्म लेवल पर लाइज है तो ऑटोमेटिकली वॉश हो जाए। वी आर प्योर एट दैट लेवल, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, एंट्रोपी इज जीरो, देयर इज नो डिसऑर्डर एट दिस सूक्ष्म लेवल। ये मटेरियल भी कह रहा है, तो हम भी तो मटेरियल है भाई। ऐसा कोई है जो एटम से नहीं बना हो संसार में? सिंगल एटम मैग्नेट है, वो चाहे यहाँ का एटम लो चाहे अमेरिका का लो, एटम है। हम सब एटम से बने हुए हैं। तो जब आप सूक्ष्म होते जाते हैं तो आप में एक नेचुरल इंटेलिजेंस ये बढ़ जाता है, आप में मतलब एक ऑटोमेटिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती है। मटेरियल में भी वही चीज होती है, लेकिन मैं फिर कहूंगा इट इज यूनिक, दिस सूक्ष्म स्टेट इज यूनिक, इट्स नॉट ऑर्डिनरी। वहां पर फिर इसको ऐसे कहते हैं स्पेस टाइम नहीं होता था, वहां स्पेस टाइम गायब हो जाता है। हम बात करते हैं स्पेस टाइम, स्पेस का मतलब क्या है? हम कुंडली बनाते हैं तो क्या पूछता पड़ता है जी कहां जन्म हुआ आपका, किस समय हुआ? वो तो पूछता दो ही चीजें, स्पेस और टाइम। ये सारा खेल स्पेस और टाइम का, रेलेटिविस्टिक जो नेचर है। लेकिन इस सुपर पैरामैग्नेटिज्म पर स्पेस और टाइम कोलैप्स हो जाता है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां स्पेस और टाइम नहीं होगा, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट। ना फ्यूचर है ना पास्ट है, इट इज ए प्रेजेंट व्हिच इज यूनिक। ये डिफिकल्ट भी है लेकिन इट इज देयर। तो वहां से अब हम हम एक्सपेरिमेंटली जब मैं देखता रहता हूं तो हमें नाना की वाणी और कबीर की वाणी याद आती है, वो सच कहा करते थे। इस समय ऐसी स्टेट है इंसान के अंदर भी, और मैं कह रहा हूं कि इंसान भी अंदर से मैग्नेटिक है। हम भी, हमारे अंदर भी कोर होता है जो कि बड़ा रेयर होता है, और जब हम कोर की बात कर रहे हैं तो उस कोर पर भी ऑल आर वन। नेक्स्ट प्लीज। ये अनरिजॉल्व्ड इशू है जिसके ऊपर हाई रिसर्च चल रही है।
कौन देखिए अब इसको, ये ऑर्डिनरी है, हम सब यहाँ फंसे हुए सब डिसऑर्डर है, हम ऑर्डर में पहुंच सकते हैं। दिस इज सूक्ष्म स्टेट। ये मटेरियल में तो हम प्रूव कर दिया हमने, कोर मटेरियल की कोर में बिल्कुल प्योरेस्ट है जो कि सुपर पैरामैग्नेटिक हो जाता है, जिसमें की क्षमता करोड़ों टाइम है, जो बिग डेटा की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आना इजी नहीं है। हमें अगर ऑर्डिनरी दुनिया से यहाँ आना है तो हमें कहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा, ये सरफेस। लेकिन सरफेस क्या, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारा तोड़ना पड़ेगा तब हम यहाँ पहुंच सकते हैं। तो सरफेस को रिसर्चर क्या करता है, इस सरफेस डिसऑर्डर को हैंडल करता है रिसर्च में। कैसे इसको हैंडल करना है ताकि मेरा मटेरियल जो सुपर पैरा बन जाए, ताकि मैं ब्लड की सेंसिटिविटी को चेक कर सकूं, एमआरआई के लिए यूज कर सकूं। ये तो अवेलेबल है, ये टेक्निक है अवेलेबल है। हाइपरथर्मिया टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फ्यू कैंसर इज अवेलेबल नाउ, सेंसर्स आर अवेलेबल नाउ, कम्युनिकेशन रेफर कर डाला, इट इज अवेलेबल नाउ। ये जो मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, इट इज अवेलेबल नाउ। इसके क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं 15 साल से, ये अवेलेबल है टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या भी नहीं है, कुछ सेक्टर में जैसे वॉल्वो चलती चंडीगढ़ से दिल्ली, उसमें कुछ मटेरियल नैनो मटेरियल का बनाना शुरू कर दिया। तो आप देखिए उस वॉल्वो में छोटे मोटा पोजीशन से कुछ नहीं होगा। देखो अगर नैनो मटेरियल की कार होगी, अगर आप 1000 फीट से भी नीचे गिरेगी कुछ नहीं होगा उसको, उसका शीशा नैनो मटेरियल कुछ नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी टकराएगा, मैकेनिकली सारा नैनो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो टॉक्सिक फ्री है कि नहीं है, क्या पॉइजनस तो नहीं है वो, ये सबसे बड़ा चैलेंज। तो इसलिए आई इनवाइट एवरीबॉडी टू एंटर टू डिस्कस। ये कॉमन गांव का आदमी तो है, मिट्टी के घड़े में पानी पिया करते थे, क्या थी वहां भी तो कोई वो तो नैनो टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई बड़ी हाई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई बड़ी थ्योरियों की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी डिस्कवर कर सकता है। मैंने आपको बताया, आपको तो पहले से अवेलेबल है। नेक्स्ट प्लीज, ये कुछ नेचर की रिपोर्ट से नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट करना, 5 मिनट सर, 5 मिनट तो ये नेचर की नेक्स्ट इस तरह से हम डेवलप करते हैं नैनो मटेरियल को। हम बना सकते हैं, घरों में भी बना सकते हैं, चूल्हे पर भी बना सकते हैं इस मटेरियल को। इसके लिए कोई बड़ी हाई फाई लैब की जरूरत नहीं है बनाने की, लेकिन देखने के लिए, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप है करोड़ों होता है। अगर आपको नैनो मटेरियल देखना है कि उसकी दुनिया कैसी है, वी नीड हाईली माइक्रोस्कोप। एक होता है ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, इस सूक्ष्म जगत को आपको देखना हमारी आंख नहीं ना देख सकती। अगर उसको देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप चाहिए ताकि एटम्स को देख सके किस तरह से है उसका बिहेवियर, तो आप उसको कर सकते हैं। इट इज देयर। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। यहां मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे फख्र होता दिमान साहब, एक लड़की सरका घाट की थी, लड़की, उसने मैग्नेटिक नैनो कौन साहब के साथ भी उसने कुछ काम किया था, उस लड़की ने मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बनाए। अब देखो यहाँ एक चीज है, हम धाम खाते हैं गाँव में, लेकिन कुछ खास किस्म के होते हैं सर, यार उसके हाथ में जादू है। देखो नैनो मटेरियल तो कोई भी बना सकता है, सारे बच्चे, लेकिन कुछ खास बच्चे होंगे जिनके नैनो मटेरियल बड़े पर्टिकुलर होंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। उस लड़की में ऐसे मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है, उसका भविष्य भी बदल गया, आज वो टॉप साइंटिस्ट की कैटेगरी है। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि अब वो धाम भी तो कई बनाते हैं, लेकिन खास किस्म के होते हैं कुछ स्पेशल, यार उसके हाथ की खानी है, तो वो भी तो साइंटिस्ट है, उसको कोई फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी आती, लेकिन बनाने की कला है। ऐसे ही नैनो मटेरियल की बनाने की भी कला है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट ऐसे बनाते हैं इसको। अच्छा, दूसरा एक चीज और है, होता क्या है, जब आप नैनो मटेरियल को बनाते हैं, मतलब बड़े से जब आप छोटे की तरफ आते हैं, ये चिपक जाते हैं आपस में। जब आप बड़े को छोटा बनाना शुरू करते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, चिपकने नहीं चाहिए नैनो पार्टिकल, तो ना तो ड्रग बनेगी इसकी, कोई एप्लीकेशन नहीं होगी। मतलब क्या, बड़े को आपने छोटा बनाना है, साथ में वो आपस में भी नहीं चिपकने चाहिए, सब अलग अलग रहने चाहिए। ये रिसर्चर का काम। जैसे मन का क्या काम है, मन क्या करता है हमारा, हर जगह ऐसी जगह ले जाएगा हमारा मन
जो मतलब डिफरेंट होगा, लेकिन अगर हम कोर पर देखेंगे तो वहां का डिसीजन बड़ा सुंदर। ऐसे ही इसमें भी होता है रिसर्च में, जब आप बड़े से छोटे में जाते हैं जाने नहीं देता मटेरियल, जैसे हमारा मन भी सूक्ष्म लेवल में जाने नहीं देता, एकदम हम बैठ नहीं सकते ध्यान, मन भी चलाता है, मटेरियल भी करता है ऐसा, मटेरियल भी करता है, उसका भी मन है, तो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, तो वहां पर जब आप पहुंचते हैं तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैसे ही इंसान के साथ भी है, तो ये चिपकने नहीं चाहिए। तो अगर आपने ड्रग बना लिया, अगर चिपक गए तो अंदर कुछ और ही हो जाएगा। इट शुड बी स्टेबल। स्टेबल का मतलब है अगर आपने एक बड़े के छोटे 100 बनाए तो वो 100 अलग अलग रहने चाहिए, ये नहीं कि उसका कुछ उम्र बन जाए, तब नहीं चलेगा, कोई ड्रग नहीं बनेगी, कोई एप्लीकेशन। तो चैलेंज ये है कि बड़े से छोटा भी बनाना है, वो आपस में अलग अलग भी रहने चाहिए, तब ब्यूटीफुल है, तब उसकी दुनिया बदल गई। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये टेक्निक ये देखिए, जो बायोमेडिकल के लिए विट्रो में करते हैं, विवो में करते हैं, मतलब इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, वो तो हमारे प्रोफेसर साहिबान यहाँ बैठे हैं, वो इसके ऊपर चर्चा डालेंगे, और आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह से होता है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए जो फिश है, ये देखिए जो मछली है, तो क्यों बोलते हैं फिश पौष्टिक होती है? इट इज फुल ऑफ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल, इसकी जो स्किन है फुल ऑफ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल होती है मछली की, और इसमें नेविगेशन होती है। देखो एयरक्राफ्ट उड़ान भरता दिल्ली से न्यूयॉर्क की, कैसे ऊपर स्पेस में उसको कौन बताता रास्ता? ऊपर कोई सड़क थोड़ी नहीं है, उसको बताती है कंपास। कंपास क्या होती है? मैग्नेटिक होती है, तुम्हें तेरे कहां चलना है। तो देखो मछली में कंपास नेचुरल है, ये मछली की जो स्किन होती है, इट इज ऑटोमेटिकली, इट इज अ नेचर। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये देखिए नैनो फिल्टर है, ये नैनो फिल्टर है जो हमने प्रोटोटाइप बनाया है विद कोलैबोरेशन विद आईआईटी एंड बीएचयू ग्रुप और बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए। देखो सबसे बड़ा जो पानी को फिल्टर करने का वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नहीं मिक्स होना चाहिए। जो शिमला में न्यू शिमला और उधर को हुआ था सुमकी साइड, वो ई कोलाई बैक्टीरिया था, ई कोलाई, उसकी वजह से जॉन्डिस हो गया था छोटे बच्चों में, लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर नहीं डैमेज होगा, और वाटर बॉर्न डिजीज सबसे खतरनाक होती है क्योंकि लीवर को डैमेज करती है। तो उसके लिए कौन? बैक्टीरिया। तो पानी से, और मैं फिर कहता हूं यहाँ अगर कुछ ना हो ना, पानी को बॉयल करें, क्योंकि बॉयल करने से बैक्टीरिया को आप मार सकते हैं। 12 घंटे बाद आप बॉयल करिए, सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ मैं झलकियां दिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूं ऐसे नहीं चाहिए हमारे को ऐसे चाहिए जो बड़े से छोटे है, तब इसकी ड्रग बनेगी, तब ड्रग बनेगी इसकी। तो नॉन, एक तो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, विषैली ड्रग कौन लेगा? दूसरा स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मतलब ये नहीं पानी में घुल के ड्रग कुछ और ही हो गया, तो इसलिए 10-15 साल का क्लीन कर रहा है। यूनिफॉर्म होना चाहिए और पानी में घुलनी चाहिए। कई बार ये होता है दवाई डालते हैं पानी में, वो घुलती नहीं, तो फेंक देना, उसको नहीं पीना, इसको तो घटिया है। इट शुड बी वेल डिस्पर्स इन एक्वस मीडियम, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, आई हैव कोलैबोरेशन विद स्पेन लेडी, बाय प्रोफेशन शी इज डॉक्टर, उसके 12 पेटेंट है कैंसर के ऊपर। कैंसर की एक खासियत, अगर 42 डिग्री का आप तापमान करते हैं, 42 डिग्री का, तो कैंसर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, आप बच्चों पढ़ते होंगे बीएससी में, एडी करंट होता है, एडी करंट होता है, तो जब मैग्नेटिक में एडी करंट पड़ेगा तो क्या हो जाता है? वो हीट। तो जैसे 42 डिग्री का तापमान होता है तो कैंसर का सेल डिस्ट्रॉय होता है। ये खास, इसलिए इसका साइड इफेक्ट नहीं है इस टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, यहां पर हम जो है मैग्नेटिक पाउडर डालते हैं जहां कैंसर होता है, ये कैंसर सेल है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके 42 डिग्री के तापमान पर हम कैंसर को। लेकिन मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ, कैंसर इज ऑफ डिफरेंट काइंड। जैसे पैनक्रिया का कैंसर है, वो बहुत, क्योंकि लोकल एरिया में, एक तो है ब्रेन का कैंसर, वो तो इसीलिए क्योंकि यहाँ इंजेक्ट करना आसान है, लेकिन अंदर पैनक्रिया का लोकल एरिया में ड्रग को ले जाना भी चैलेंज है। वो खैर डॉक्टर है, वो दैट इज बियॉन्ड माय स्कोप, लेकिन कुछ एरिया में जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इसको आप क्योर कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, टारगेटेड, मतलब अगर बाजू में दर्द है, तो मेडिसिन में क्यों खा रहा हूँ पूरे शरीर से, बाजू में डालो, इट इज अवेलेबल नाउ।
अगर पाँव में दर्द है तो ड्रग डालो, दैट इज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये है वायरस और ये नैनो पार्टिकल। तो कैसे इसको हम जो है कैसे पकड़ लेता है, पूरे वायरस को पकड़ लेता है मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल और उससे इसको हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मेजर चैलेंज क्या है मेडिसिन में? अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेजर चैलेंज है। मैं फिर कहा, जिस दिन हमारे ब्लड की, जिस दिन हमारे खून की मैग्नेटिक सेंसिंग डिटेक्ट हो जाएगी, उस दिन मल्टी टेस्ट का कल्चर खत्म हो जाएगा। एक टेस्ट से आपको सारा डायग्नोज मिल जाएगा, तो फिर अलग अलग टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। ये चैलेंज है। जिस दिन खून के लेवल पर पहुंच जाएंगे, सेंसर हमारे हो जाएंगे जो खून की मैग्नेटिक सेंसिंग कर सके। मैं कह रहा हूं कि आवर ब्लड इज मैग्नेटिक, लेकिन वो इतना वीक मैग्नेटिक है, उसको पकड़ने के लिए हमारे पास सेंसर नहीं है। लेकिन कुछ सुपर पैरामैग्नेटिक सेंसर नेचर की रिपोर्ट में डिस्कवर हो गए हैं, लेकिन मैंने फिर कहा इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज अगर डिस्कवरी हुई तो 10 से 15 साल का समय लगता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल से पास करना पड़ता है, तब इंसान के ऊपर लागू होती है, उसमें समय लगता है, बट वी आर क्लोज टू दैट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, बायोसेंसर के ऊपर मैंने बताया। एक और चीज कहना चाहता हूं, ये जो टावर लगे हैं छतों पर, ये भी खतरनाक है, इससे भी रेडिएशन होती है। मैंने अभी 2 एमफिल के बच्चों से पूरे शिमला का सर्वे कराया था। कुछ टावर है यहाँ पर जो छतों पर लगा है, इट इज ऑल्सो डेंजरस। जबकि देखो एक न्यू साउथ वेल्स कंट्री है, वो बोलती है कि टावर लगाइए, लेकिन वहां रेडिएशन 0% होना चाहिए, लेकिन इसको चेक कोई नहीं करता। तो दिस इज ऑल्सो इशू। और मेरी एडवाइस रहेगी, रात को जब आप मोबाइल में हैं, काइंडली इसको 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, वहीं सो जाते हैं, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। और 24 मिनट से ज्यादा अगर आप यूज करते हैं तो आप एक्स्ट्रा डोज लेंगे। और एक और चीज कहना चाहता हूं, टावर, अगर टावर के आसपास आप रह रहे हैं, 24 घंटे में आप कितनी हीट लोगे अगर टावर के पास है? जितना कि 19 मिनट माइक्रोवेव के अंदर। क्या 19 मिनट आप माइक्रोवेव के अंदर रह सकते हैं? खाने का क्या बन जाता माइक्रोवेव में 1 मिनट में? जितना आप माइक्रोवेव के अंदर 19 मिनट की हीट लोगे, उतनी हीट लेता है 24 घंटे में अगर आप टावर के पास है। कहां पर? 500 मीटर के अंदर, और वो भी स्पेशली डायरेक्शनल एंटीना के पास है। ये फैक्ट्स है, ये मेरी नहीं है, नेचर की रिपोर्ट्स है, और मैंने प्रैक्टिकली इसको प्रूव किया। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने बताया 19 मिनट पर दिन माइक्रोवेव के अंदर, तो आप इमेजिन करो। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हर एक के ऊपर फर्क है। ये देखिए, पीछे करना, पीछे करना, ये देखिए पीछे, ये देखिए अगर टावर के आसपास है तो क्या हो जाता है? देखिए ब्रेन का हाल देखो, कितने पैचेज है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ये अगर एनवायरमेंट फ्री है टावर की, ये एविडेंस है। नेक्स्ट प्लीज। प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा होता है। नेक्स्ट। 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 इरिवर्सिबल फर्टिलिटी कम हो रहा है आजकल बच्चों का। ये जो कॉल सेंटर में बैठे बैठे काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, फर्टिलिटी कम हो रहा है, और आप पैदा नहीं कर सकेंगे रेडिएशन में। दिस इज आल्सो सीरियस कंसर्न। इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट है, कैल्शियम आयन का रिलीज हो जाता है, बोन्स वीक हो जाते हैं, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। वो खैर अलग चर्चा का विषय है, फिर किसी दिन करेंगे। नेक्स्ट, अगर किसी को हो तो दे कैन इंटरेक्ट विद मी इन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, डीएनए को डैमेज करता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, स्किन हमारी डैमेज हो जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, स्किन में गड़बड़ हो जाती है, कुछ नहीं बचता अगर टावर के आसपास है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, आंखें भी बोन्स। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, न्यूरो बेस हो जाती है, न्यूरो के एक्सपर्ट बहुत कम है इंडिया में। नेक्स्ट। नेक्स्ट, हर कंट्री का मेरे पास डेटा है, लेकिन इतना टाइम नहीं है, बस 2 मिनट अब लेना चाहता हूं क्योंकि आगे काम साफ अभी बस है। नेक्स्ट। 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 नेक्स्ट, ये डेप्थ जो टावर के आसपास हुई। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, सब कुछ सबके ऊपर इफेक्ट होता है, चाहे पक्षी है, चाहे पौधे है, चाहे सब्जी है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, सॉल्यूशन भी है इसके, नेटवर्किंग जो नहीं करते। नेक्स्ट। 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 नेक्स्ट, फास्ट करने दे थोड़ा। ये यहां देखिए। नेक्स्ट, मैंने जो बताया आपको कि पानी जो है 3% है, और शिमला का जो स्टोरेज सिस्टम है सर, इट इज नंबर 1 इन एशिया।
जो शिमला का स्टोरेज सिस्टम है, इट इज नंबर 1 इन एशिया। सीओ एक जगह है छाबड़े के पास, वहां इकट्ठा होता था पानी जब अंग्रेजों के टाइम से। इट वाज नंबर 1 इन एशिया, पर आज हमने क्या कर दिया? वी आर नॉट मेंटेनिंग दैट इवन। हमारा क्यों हो रहा है पोल्यूशन? ये चिंता का विषय। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये हमने उस टाइम किया था 2008 में। नेक्स्ट, यहाँ से सैंपल दिल्ली जाते थे, चेक होता था। आज अगर पानी शिमला का साफ है तो इट इज बिकॉज ऑफ दोज एफर्ट्स। उस टाइम जो चीफ जस्टिस साहब से बहुत स्ट्रांग थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। नेक्स्ट। हमने हर जगह के सैंपल लिए थे शिमला के आसपास। नेक्स्ट, ये सीओ की जगह है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये उस टाइम के बने हुए अंग्रेजों के टाइम के, आज के नहीं है ये टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट। ये हाँ, नेक्स्ट। ये है जो मनाली का है, जो हमने एनवायरनमेंट की स्टडी की। तो एनवायरनमेंट को भी नैनो टेक्नोलॉजी से आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू। ज्यादा नहीं, तो सब करने 5 मिनट खाते हैं। So any question please? हाँ जी, वही है, सेल्फ सर्टिफिकेशन है ना सर। कोई इसमें रेगुलेटरी सिस्टम तो है नहीं है। क्लाइंट को करते क्या है सर, हर एक ऑपरेटर ना, मतलब वो टावर लगाने को जाता है, अपना एंटीना सब एक टावर में लगा नहीं होना चाहिए। इसकी सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि 500 मीटर के अंदर लोकल एरिया में नहीं होना चाहिए। होता क्या है, अगर एक ही टावर है ना सर, एक ही एंटीना तब तो चलेगा। होता कि एक टावर में बहुत सारे एंटीना लगा तो रेडिएशन लेवल बढ़ जाएगा। वो तो आप ये कर सकते हैं। मैंने इस प्लेटफॉर्म से सर, यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से कम 250 टावर हटा दिए। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, असम से, नॉर्थ ईस्ट से, मध्य प्रदेश से, कहीं तो ऑलरेडी बीच गांव में हमारे थे। मैं कभी ये करो तो उनके फोन आते सर, हटा दिया। तो अच्छा लगता है हमारे को अंदर, क्योंकि इंसान की लाइफ कई बार बोलते हैं कि हमने तो यूवी लगाया है। क्वेश्चन आपका नहीं है, क्वेश्चन है तो बात में चला तो साफ बात मिल रहा है। हमारे देखो, हमारे पढ़ने लिखने का क्या फायदा कि हम समाज को कुछ ना दें। ये एजुकेट करना तो हमारा फर्ज बनता है। जीने के लिए तो सब आए हैं। ये लाइफ अगर मिली है तो मैं कोशिश की 8-10 लोगों को अगर हम सेव कर पाए थ्रू आउट लाइफ, अच्छी बात है। अपना नहीं है क्वेश्चन, सेल्फ। हमारी जो आज तक ना, आई एम सॉरी टू से, सेल्फ अप्रोच हो गई। जनरल कोई नहीं इस पर सोचता। तो आई इनवाइट कि हमें इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। और आई थिंक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि इस तरह है। और थैंक्स टू दिवान साहब एंड एंटायर फैकल्टी, एंटायर साइंटिस्ट, ऑफिस पीपल। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितनी भी एक्टिविटी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मैं शिफ्ट विद दिस फ्रॉम द कोर ऑफ आर्ट। I have high regard for all of you, those people who are involved in this program. Thank you very much. सर एक क्वेश्चन है, ये जो मछली का बताया आपने कि उसकी स्किन जो है नैनो टेक्नोलॉजी में मैग्नेटिक नैनो खतरनाक है, मगर क्यों वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो रहे हैं उसमें स्किन में? क्या दूसरे किसी जो एक्वेटिक लाइफ है उसमें नहीं है? बहुत अच्छी बात कही है मैंने। आप देखो सर, मैं एक चीज सर प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। मेरी माँ की बूढ़ी माँ, याद आता है सर, अब तो नहीं है, जब हम छोटे छोटे वो चिकनी मिट्टी खाते थे, मिट्टी मैंने सारी मिट्टी की स्टडी की सर, राजस्थान की, कांगड़ा की, सारी मिट्टी की मेरे पास लैब में है मौजूद। इट इज फुल ऑफ खाने की, मिट्टी खाने की। कैडी लेडीज जब डिलीवरी होती है कुछ खाने की होती है, समझ को डेफिशिएंसी है। इट इज फुल ऑफ आयरन। तो जो स्किन है उसकी सर, इट इज नेचुरल, इट इज बिल्ट आयरन बेस। मैं कह रहा हूँ हमारा खून भी आयरन है सर, लेकिन सेंसर अभी तक उसको, जिस दिन वो आयरन को डिटेक्ट कर लेगा ना सर, सेंसर टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। सारी हिस्ट्री वहां आ जानी, आप डॉक्टर से डायग्नोज करो पूरा कि आपका फॉल्ट कहाँ है बॉडी का। क्योंकि सूक्ष्म लेवल में जब आपको पता लगे जेनेटिकली, तो फिर दिक्कत ही कोई नहीं है, सब इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। मतलब आजकल आपने देखा होगा, आजकल अगर आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, वो मेनू नहीं देते हैं, आपने वो होता है स्कैन करते हैं, उसमें आ जाता है। तो क्या है वो, जैसे आजकल सर्टिफिकेट में भी क्या है, बीच में होता है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां है। तो सर इस मैग्नेटिक में पूरी इन्फॉर्मेशन है बॉडी सूक्ष्म लेवल। जैसे सर ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं नहीं, बोला जाता है कि आपका मैग्नेटिक सिस्टम की वजह से आते हैं।
क्या इस तरह का कोई Yes. नैनो टेक्नोलॉजी यस, लेकिन उसमें हर्डल पता क्या है सर, ये जो रेडिएशन है उससे कई बार उनका नेविगेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा जब कोरोना के काल में मैं चंडीगढ़ के लिए मुझे जाना पड़ा, इतना साफ सुथरा एनवायरनमेंट था, ऐसे ऐसे पक्षी देखे मुझे जो कि फिर गाइड 4 लेन और ट्रैफिक हो गया। जब ट्रैफिक नहीं था सर, आपने गंगा देखो कितनी साफ हो गई, ये ऑटोमेटिक है सर, उनमें नेचुरल इनबिल्ट है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी आज की थोड़ी है। अब कैन यू बिलीव कि वो 14 साल वनवास में रहे हैं, तो कोई ना कोई तो फैब्रिक टेक्नोलॉजी थी उस टाइम में, वो कुछ और कहते हैं उसको। सरकार की आपने बात की, क्या उसने पार्टिकल्स को कैसे किया तो बता रहे रिवर्स माइसल टेक्निक से उसने नेचुरल इनबिल्ट किया। वही तो कह रहा हूँ, खाना बनाने वाले बेचारे अनपढ़ होते गाँव में, लेकिन इतना अच्छा जायका बनाते हैं, इतने, मैं कहूँ कि शेफ क्या करेंगे अमेरिका के बड़े बड़े शेफ, इतनी अच्छी उनमें कला है। इसका मतलब दे आर इनबॉर्न साइंटिस्ट, नैनो साइंटिस्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी ऑल कैन वर्क टुगेदर। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस यस यस, रेडिएशन यस सर, मैं कह रहा हूं कि 19 मिनट माइक्रोवेव के अंदर रह सकते सर, इतनी हीट रहती है वो, क्योंकि अंदर से वो रेडिएशन था वो। यस यस, मैंने भी सुना, डेंजरस है सर रेडिएशन। देखो कहने के लिए है ना सर, रीजन तो सबके पास होते हैं, उसका तो कोई नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि डैमेज होता है सर। एक्सेस मोबाइल भी डैमेज करता है, ऑनलाइन कह रहा हूँ मैं। यस, वो तो है ही है सर, लेकिन ये नहीं कि ये नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिमम यूज होना चाहिए सर। क्या ये एडिक्ट हो गए बच्चे? कई बार मैं शादी में जाता हूँ सर, चंडीगढ़ से दिल्ली, बच्चे वहां से शुरू हो जाते हैं, वहां पे मैं कहीं बोला बच्चे क्यों इतना, लेकिन वो नहीं मानते। इट्स नॉट गुड थिंग। आप मोबाइल है, आप ये नहीं बोलो आज क्या बनाया, अच्छा उसमें नानी ने क्या किया वो किया, इसके लिए नहीं है मोबाइल। आप टू द पॉइंट बात करो, उसके लिए टेक्नोलॉजी। ये तो नहीं आप एडिक्ट हो गए, टेक्नोलॉजी ने आपको ही घेर लिया। आप गुलाम ना बने टेक्नोलॉजी, इसका ऑप्टिमम यूज करें। थैंक यू। It was such an engaging session. Thank you very much, sir. We are thankful to Dr. Mahavir, how he has explained the nanotechnology and it is used in modern science and its advancement. Thank you very much, sir. I request the audience to be very attentive and to switch off their mobile phones, please. Our second presentation for the day is I request our technical team to run the documentary which is on cyber-physical systems. Thank you very much. Take the example of your smart car interacting with you while parking, or your smart devices at home, sensing your presence and providing you information like the room temperature as you enter your home. These are powered by cyber-physical systems, which is a new class of engineered system that integrate computation and physical processes. It encompasses technology areas of cybernetics, mechatronics, design, embedded systems, Internet of Things, artificial intelligence, and much more. Some of the fields that are already reaping the benefits of CPS are medical monitoring, process control systems, robotic systems, and automatic pilot avionics.
Though useful and available, we still do not fully understand why cyber-physical systems are and how they are useful to us. So today, we embark on a journey to understand and explore the world that is cyber-physical systems. Let's begin with its origin. Dr. Helen Gill, who specializes in computer and information science and engineering at the National Science Foundation in the United States of America, coined the term cyber-physical systems as it emerged in 2006. Cyber physical system, this is all of future. This is about convergence of technologies, communication, computing, decision making, perception, and autonomous action. So when you have all of these technologies together, you have digital components, which is communication, computing, decision making through artificial intelligence. And then you also have the machine or the physical part, which is related to perception, gathering data, and arms that would give it action. So perception to action, and this is all of your future. So examples are manufacturing in Industry 4.0, where you have intelligent machines that do self-diagnosis. They also do the decision-making, fault diagnosis. Then you have autonomous vehicles going deep under the ocean, exploring there, going up in the space, and even small things like pilotless cars. Let's break it down. CPS is about the intersection, not the union, of the physical and the cyber. Cyberspace is the notional environment in which communication over computer networks occurs. It combines engineering models and methods from mechanical, environmental, civil, electrical, biomedical, chemical, aeronautical, and industrial engineering with the models and methods of computer sciences. By using a combination of machines, sensory devices, embedded computational intelligence, and various communication mechanisms, CPS monitor physical elements with computer-based algorithms tied to the internet. This means they are capable of independently functioning based on their physical surroundings. Before we delve deeper into the science of cyber-physical systems, let's get a broader understanding of the fields likely to benefit from this new cyber revolution. Cyber-physical systems have the potential to transform distribution of electricity by integrating the behavior and actions of all users connected to it. The benefits of a seamless intelligent system would include self-automation and seamlessly balancing power supply due to varying energy requirements of customers across regions. Integrating renewable power sources, reduction of losses, and enhanced safety. Some other areas where cyber infosystems are likely to have a major impact are smart water networks to reduce leakage, better groundwater management, just to name a few. So now that we have a better idea of its practical benefits, let's dive in. CPS is often associated with the term cyberspace, but the roots of the term are older and deeper. It would be more accurate to view the terms cyberspace and cyber-physical systems as stemming from the same root, cybernetics, rather than viewing one as being derived from the other. So, to understand CPS and its objectives, we should also understand the role of cyberspace and cybernetics. Norbert Wiener, an American mathematician, philosopher, and professor of mathematics at the Massachusetts Institute of Technology, coined the term cybernetics during the World War II. Wiener pioneered the technology for automatic aiming and firing of anti-aircraft guns. Although the mechanism he used did not involve digital computers, the principles involved were similar to those used today in computer-based feedback control systems, which is a conjunction of physical processes, computation, and communication.
To understand the practical applications of cyber-physical systems and research being carried out at the Indian Institute of Technology, Delhi, we met Professor S.K. Saha and his team of researchers in the Department of Mechanical Engineering. Cyber-physical system includes robotics, the IoT, Internet of Things, the smart manufacturing. This is required in India in order to improve the quality of the life in the villages as well as in the urban places. To robotics, telemedicine, I can inquire, a doctor sitting in the city can inquire on almost a live mode to a patient there, and if in case of emergency is required, immediately the person can be brought in, or even more advanced if we have the robots doing certain tasks, maybe assisting to do something, people to move from here and there. So then robots can also help doing things. So the quality of the city life can be also exported to the villages and other remote places. Cyber-physical systems are heralded as the next paradigm shift in technology that can exponentially spur growth and development. CPS are intelligent, autonomous, and efficient cyber-physical systems expected to drive innovation in sectors as diverse as agriculture, water, health, and manufacturing. Given this potential and India's focus on technology, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi launched the National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems in 2018. It is being implemented by the Department of Science and Technology, Government of India, at a total outlay of Rs 3,660 crores over 5 years. 15 technology innovation hubs, or nodal centers, are spearheading the research activities. The mission is mandated to coordinate and build linkages with research institutes and labs in India, as well as internationally. Collaborations with industry will help deliver commercial technology and products to build a vibrant innovation ecosystem by providing a reliable platform for technology-based startups and entrepreneurs, thus fostering research innovation, world-class technology, and product development. In the initial stage, the identification of the host institutes, establishment of TAH and as well as the TBIs is the first target for us. We have almost we completed that particular phase. The next phase, in fact, we will be working on these advanced technologies connecting to the international collaboration, and also we want to bring the industry partners. Under the mission, each hub will create a proximal technology business incubator or link with existing TBIs. All the hubs will work in a distributed model in the sense that all the incubates may not necessarily be physically located in the TBI, but may avail the services at their own location. Interdisciplinary approach is the focus of the mission. Hubs have to work together for delivering technologies and products. Scientific Advisory Committee and Inter-Ministerial Coordination Committee will ensure the cooperation and working together of hubs. A coordination committee chaired by Secretary DST and comprising members of all heads of hubs will be created so as to ensure better outcomes of the research activities for development of collaborative solutions. So this is not one technology that's coming in between, but we are having the array of technologies. Therefore, the technology innovation hubs will specialize in one of these foundational technologies, develop what we call the required technologies, and work with along with the other hubs so that the final deployable technology will be made available to the users. Therefore, the realization of this mission will be through these 25 technology innovation hubs. One of the approved proposals focuses on the theme of human-robot collaboration, or cobots.
Taking the lead in this feat, Indian Institute of Technology Delhi has envisioned a world-class technical resource center with competencies in foundational research, complex system design, and vibrant application-focused innovation. They are especially focusing on the fields of medical, agriculture, and smart manufacturing. Under this technology innovation hub for robotics, we have proposed four major areas. Number one is the medical robotics. Second one is agriculture and disaster management. The third is the defense robotics, and the fourth is the industry 4.0 factory for smart manufacturing. But I can give another example. For the COVID, we are working on teleoperation of a robot for ultrasonography. Now, COVID patients are there, and doctors do not want to go very close to them. So, a robot hand will do the ultrasonography, and the doctor will be sitting remotely behind. So, working in that kind of technology. And then, similarly, in a COVID patient area, we are trying to deploy robots, mobile robots, which will take the food, medicine, and talk to the doctor over the internet or over the Bluetooth or Wi-Fi. Similarly, for the smart manufacturing, for the small industries, they do not want to have very expensive solutions, fully automatic. So if I have a mobile robot now which can do things, but with a human being, so that even a medium-scale industry should be able to adopt this kind of. The mission aims to create robustly productive and sustainable hubs. The development mechanism will be a bottom-up revenue model in which the initiation of the hub is by government support through the National Mission of Interdisciplinary Cyber-Physical Systems for developing capabilities and gradual build-up of resource generation in the later years of the project period. When we have these 25 technology innovation hubs, we also have, along with them, the 25 technology business incubators. The TBI will have infrastructure, will have the mentoring capacity, the industry collaborations, and the live problems. So therefore, that is an aggregating point where the research is getting translated into a product, and as well as the churning out of the startups. The mission has multiple objectives and encompasses knowledge generation, technology or product development and commercialization, human resource development and skill development, innovation, entrepreneurship and startup ecosystem, and international collaborations. The selected TIs have prepared and submitted their dream proposal for groundbreaking innovation plans. The Indian Institute of Science, Bengaluru, has an ambitious vision of making robots, drone innovations, data sets of artificial intelligence, and automated guided vehicle research. We visit Professor Bhardwaj Amritur, Professor in the Electrical Communication Engineering Department at IISc Bengaluru, and understand from him and his team the practical rollout of cyber-physical systems and their wide applications. So we are focusing on multiple different innovations. One is the area of mobility. With 40% of the people living in cities, as you know, our cities are so congested, traffic is such a problem. How do we solve this problem? One way of solving this problem is to go vertical. And the skies. The Class D airspace, which is airspace up to 400 feet from the ground, that airspace is free. How can we construct roadways or what we are calling highways here so that we can have drones actually fly around safely and securely in the space? Technical Associate of Robotics at IISc, Aditya Verma Sagi, works closely with Professor Sharma in developing futuristic machines. He demonstrates to us the different technologies based on intelligent systems. Basically, this robot was developed here at IISc in our lab, and we're trying to explore reinforcement learning, machine learning approaches. For example,
Our second presentation for the day is Biotechnology Driven Processes and Products by Dr. S.S. Kanwar. A brief introduction of our second speaker. Dr. Kanwar, a senior professor at the Department of Biotechnology, Himachal Pradesh University, Shimla, does research in nanotechnology, medicinal chemistry, therapeutics, and biocatalysis. Dr. Kanwar has guided hundreds of students for their postgraduate degrees, Master of Philosophy, and PhD degrees in biotechnology. He pursues his research activities by developing bioproducts and bioprocesses for a variety of extracellular microbial enzymes such as lipase, cholesterol oxidase, ribonucleases, etc. To assess the anti-tumor and anti-cancer activities of purified microbial enzymes, as well as some of the phytomolecules, is one of the dominant fields of research activities of Dr. Kanwar. Dr. Kanwar has published 260 articles, including chapters in the books over a career span of 28 years. He has also filed 6 patents. Dr. Kanwar is a certified reviewer of 56 international and national peer-reviewed journals. He is also editor of Current Biotechnology, Trends in Oncology, Journal of Advanced Microbiology, Insight in Enzyme Research, and Current Research in Virology and Retrovirology. It is my honor to invite Dr. Kanwar for today's lecture. Please give a huge round of applause for sir. And I also request audience to be attentive and kindly switch off your mobile phones. Please be attentive for the lecture. Thank you very much. Well, thank you very much. And a good day, a good afternoon. I think there is another program which is going on at the same time, so I'm just keeping the mobile with you. Well, in fact, the way that nanotechnology is around, okay, as we said, for maybe hundreds of thousands of years, because this is a part of nature. And as the civilization has existed over there, so those technologies, they are also there. So before, in fact, I just go ahead with my talk, that is on biotechnology. And biotechnology itself is that thing which was there, which is there, and which will be there. Okay, and maybe intentionally or unintentionally, everyone is using this biotechnology because this is mandatory for human welfare. And it was existing, as I said, it is even now. Only we are trying to understand the nature and then try to put those things or concepts in order that you can build a kind of society or those things, processes and products which support that society as human beings or maybe the living forms like animals which exist around. So before I start my talk, I will compliment Inspector Mr. Sipal and his team for taking that initiative and having a kind of fest of 7 days, the science fest that is there just to create a curiosity among all students, जिज्ञासा करने के लिए, just to create curiosity that there are number of topics where they can pursue their career. So here is another topic that is there. I will be taking you that is on biotechnology. So processes and biotechnology. So this is the topic in fact I've chosen because my purpose is to interact with all young students, and I believe that they must be pursuing their bachelor's or master's, and faculty also sitting around. So try to just read this talk on a couple of topics which must interest everyone, and that is primarily the focus. I will go ahead with the concepts of what exactly is the biotechnology, what are bioproducts, and what exactly are the bioprocesses, which give you those kind of things which you consume, which you may use as drugs, and which you will be using in the form of some kind of concepts or processes which can detoxify materials. So when you stay in your house, or maybe when the agricultural farmers in fact tend to work in the fields, so main purpose is to increase their crop and that yield that is there. वो possible तभी होती है when you put pesticides. So I have built that thought also that obviously there are certain concerns. ऐसे reasons हैं कि हमें pesticide को कम से कम use करना है
And being a biotechnologist, we must encourage towards use of biopesticides. So I believe that students primarily of life sciences organism must be familiar with that term also. So here it goes like this. Next. So basically, as I said, biotechnology was there, it is there, it will be there in future also. So basically, this is a science that we say is an everyday science, and primarily concerning the welfare of human beings. And those processes where you tend to involve living organisms, bio means basically genes, okay, and technology is geography. And as if you say life sciences, that is also gene, but then you have Vigyan, that is it. So that is the prime difference you see. And that way, biotechnological processes, they have been essential for human survival since long, okay, maybe hundreds, thousands of years there. And they involve, in fact, when you use some kind of product, simple as third khate. So you use, in fact, very tiny organisms which are capable of giving you a conversion, it's a biotransformation of the casein that is in the milk to something which is curdled, and that becomes a curd. Okay, so that is a very simple example which is there. But in Himachal and maybe at other states, so like South India, you have a lot of fermented foods. And there, in fact, those starting material that you use, they are microorganisms. They may be bacteria, in some cases, the yeast also that is there, and sometimes it is a combination, mixture have that. Because what they tend to produce, they are diverse things. They may be producing something like acetic acid. They may be producing something like acetic acid. There is fermentation, so gas is produced CO2. So a couple of things are produced, and there is a change in the nature of starting material. And that we say as transformation. And when you have that biological component, gene is there, the cells are there, living organisms are there, when you involve them in creating these kind of changes, transformation, then that becomes biotransformation. And if you go to that level, where some components of these living organisms are taken out, unko nikal lete hain, obviously technology is there, and you manipulate like genetic material, so you tend to put additional characters in that, and then you tend to use that. And wonderful example is the way we have fought the COVID. The vaccine is one of the outcome of biotechnology, and that way most of us are still around, okay, enjoying the fest of life. So life is there because biotechnology is there. So processes which involve microbes, they have been used for many, many years, but if you trace history, Egyptians were the first to make the biotechnological processes when brewing beer and baking bread in the 4th millennium before Christ, while the Chinese discovered how to distill alcohol, ethanol basically. And you see that even our state Himachal has, it's like a bowl of fruits and vegetables. Okay, in Asia basically, we have almost all kind of that vegetables, seasonal, unseasonal, and fruits, including citrus fruits which are available. And you can use them to prepare some kind of products which are naturally preserved. Because once you use that biotransformation or fermentation, the products become changed. वो अपने आप preserve हो जाते हैं. That's what is there. And also they add to the economy also, because if it is preserved, you store it for a long time, and obviously transportation becomes easy. And in some cases, maturation adds to the value. So that way, that is there. So primarily, you see that the biotechnology also gives you a number of medically important components, products. Vaccines are put, that is there. But also when people can have severe form of COVID, they were given antibodies also. And one of that form is very specific, monoclonal antibodies. So you broadly call them as immunobiologicals. And when you are diagnosis for some kind of disease, and maybe the spectrum of the pathogenesis that happens, the disease kaise hota hai, so you go for diagnostics. And that is also basically immunologically based. And you use, in fact, certain antibodies which are derived from maybe animal cells which are there. So any living cell, whether from plant or from animal or from microorganisms, when you use them, that becomes biotechnology. So fermentation and biotransformations were such important issues, and they are the most important processes which are there. And biotechnology products, they also contain additional chain which is there, hydrocarbon. Hydrocarbon is CH and other groups which are there. So if you use some tiny structure like a bacterium, it cannot manipulate the protein to that level. That we call as the post-translational processing. The protein बनता है तो उसको additional groups की जरूरत पड़ती है उसको stable करने के लिए. That is possible only if you use
eukaryotic cells, means maybe plant or animal cells. So that way it goes like this, and products, number of them, I put vaccine, immunobiologicals, fermentation products, okay, they're all are basically biotechnological products which are there. So what do you see? Biotechnology basically encompasses use of all form of living cells. Only thing you have to keep them live. And sometimes when they're live, you can keep them preserved also by dehydrating them. And when you rehydrate, they will be having their normal functions. So biological systems, living organisms or parts to develop or create or manipulate different products or processes and services is what exactly we refer as biotechnology. One additional thing जो इसमें ऐड करते हैं कि हमारी एनर्जी इनपुट भी कम से कम होनी चाहिए, भी पैसा भी कम लगना चाहिए, because obviously that matters is finance part also. So we have broader classes of biotechnology. It can be medical when human welfare is the concern, or animal welfare. Agriculture biotechnology, when you go for increasing the crop yield by preventing the diseases or the loss that happens because of pests. So rodents, rats which are there, weeds which are there, fungi which tend to cause disease in your the agriculture crops, you want to kill them. Obviously use pesticides or some kind of things which are. Then you have the industrial biotechnology, where the scale of production is very high. And that is primarily like fermentative processes. When you produce alcohol, vinegar, acetic acid from fruits primarily, okay, that is being produced. And many other products, including most importantly, antibiotics. And they are the mainstay of our health. Whenever we have any surgery we have to pass through, then you have to take care of all those organisms which can cause a disease in you, and you may tend to die also because of pus formation. So antibiotics, most important product, that is as the industrial biotechnology output that is there. And many fine chemicals. When in fact there is a cardiac arrest, many times this is because of the clot formation which happens. And this was one of the concerns even in post-COVID recovery period. So what is done? Aapko us clot ko dissolve karna hai. So there are a couple of enzymes which are biotechnological products. And one of that is transplasminogen activator. This is derived from mammalian cells. And second is a bacterial product, streptokinase. Enzyme hai, protein ko degrade karta hai, so it can dissolve your clots. And that is in fact the way you save a lot of people. Environmental biotechnology. And that is the area of concern for everyone. You want to see your environment clean. You want to get rid of anything which is decaying, or you want to get rid of that, and even you want a clean water. So there, in fact, you can use, in fact, the treatment of pollutants, industry pollutants. Industry जब काम करती है या प्रोडक्ट बनाती है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो वेस्ट की तरह प्रोड्यूस होती है. And many times when you tend to pass by any fermentation unit, जो beer and wine बनाती हैं, okay, so you have in Hamirpur also, maybe Mandi also, couple of the units, and close is Minchis, okay, Shogi. So you get a foul smell from there. So obviously this is the waste which is coming up. So you want to treat that. So environmental issues are always there. And when you use microorganisms to get rid of anything which is polluting, waste, foul smelling, irritant, so you will use the concept of the environmental biotechnology. Then comes those issues where you tend to manipulate things maybe at genetic level, modern biotechnology. And you have broader divisions for one is human biotechnology, industrial, animal, and plant biotechnology. As the name says, they are clear in themselves. And biotechnology is one of the most profitable economically sector in the world as per report of the Nasdaq. Because of a lot of these these drugs which are used, these monoclonal antibodies which are used during the treatment of COVID period, those patients which are there, and managing their health issues afterwards. So it has given a lot of pumping in terms of the finances. Next one. Now, if you trace back that obviously if biotechnology is there, then since how long it should be there? Now, most important thing that you can to see, the term itself biotechnology was acquired, that was in 1990. So that was coming to a particular time. Okay, so 1990 by Hungarian person. Then the most important thing that you see that happened in the year 1928.
Anyone from life sciences can tell me which was the antibiotic which was discovered in the year 1928? Yes. Which is the first antibiotic? Penicillin. So this was that Alexander Fleming, that is the person in the page, and that is the molecule he produced as penicillin. And it was after First and Second World War that a lot of people died during war. Those soldiers say they died because of the fight, injuries of bullet and the shrapnels which are there. So when the surgeries were conducted, many tend to suffer from sepsis, and there was no treatment, no antibiotic available. And first antibiotic was available in 1940 when second streptomycin also came into existence. So that means medical, that aspects of people, human in general, they vastly improved because they were able to live for a longer life, just getting rid of the diseases. Then in the year 1958, there was standard structure of DNA, and now you know that you manipulate DNA at various levels by you putting in fact the genes from outside with particular practice. And so this is a milestone, and that way you see that now in the year 1920, in fact, you have the biotechnology where you tend to have basically almost beaten the COVID-19 and all those strains which are around by making you competent to resist those infections. So most of you are there, okay, we are there, I am there, because we have vaccination strategies in place. So that way, the biotechnology that basically is a kind of science that is for the human welfare, the societal upliftment. So you have medical biotechnology, industrial, food, and environment. And many of the vitamins and other components which you produce as products, I said product and processes, they are including your vitamins B12, that class, acids including lactic, acetic, acetic, they all have been produced by the process of biotechnology because this is highly efficient process that is there. And also you see there is tremendous improvement in the quality of fruits which are vegetables also. And you have now melons which are seedless because they're not permitted to undergo pollination. There is in fact a kind of eggplant which uses a lot of seeds over there. Now they're not there. So improvement in terms of the quality and supplementation of antioxidants like carrot at the bottom. Now the carrot that you get is more orange because it has the carotene in that has been built into as a genetic component, and these plants now they are improved in terms of the quality. And antioxidants are anti-aging, वो आपकी age को बढ़ाते हैं basically. So another way to in 7 terms, and that is like a rainbow spectrum. And I have given those kind of colors also just to say red biotechnology, green biotechnology, then white biotechnology, yellow, blue, gray, and gold biotechnology. So they are the definitions over there. And for us, what is actually most important, the gold biotechnology, because this leads to the combination, joining together of the big data, bioinformatics, where you tend to use the computers and other things also in terms of the data from different arena, maybe plant species, maybe bacterium, maybe viruses. You compare and try to extract what is important for you, and then you go ahead. So that is basically the genetic manipulation of genome, genetic material, as well as the proteins and other things also, which are important for you. So basically, in fact, this is a genetic modification, and that is in fact also possible to genetically modify the plants and make them resistant against infections by aphids, insects, okay, weeds, for example. So that way you insert an important gene genetically into the plant species by that agrobacterium plasmid there, basically extra chromosomal, and that plant becomes wonderful in terms of resisting infections over there. So plant biotechnology is definitely an important outfield of biotechnology. For the younger people, just you guys, and even I myself say, still I'm young. So what exactly? You have a career to pursue in this particular field with options of working as a medical scientist, okay, and biotechnological, technical, or quality control biologist, epidemiologist, when disease happens in particular region, or maybe it is pandemic also. So you tend to analyze the sample, maybe blood, stool, whatever is there, depending upon the symptoms are there.
disease के क्या symptom है, so you collect samples and analyze and come out with the report. Microbiologists, medical, other lab, biotechnologists, biomanufacturing unit, the people who tend to prepare antibiotics, products which are there, food components, okay, fermented products, dairy products, all these things when they're made, so you tend to work as a specialist person over there, and also to be involved in R&D. So in vaccines, for example, you have Serum Institute, okay, you have Biocon, that is there, you have Bharat Biotech and Shanta Biotech. So if you have that kind of qualification, and then you can definitely go in the field of R&D, looking into those ways and means you have more of vaccines available against the upcoming viruses and other bacterial diseases. So more and more applications in our day-to-day lives, they are basically from pharmaceutical, more so biopharmaceutical products. And also, we have to improve on the food output because population keeps on increasing. But you have आपको yield भी बढ़ानी है चीजों की, so you take help of biotechnology. And medical biotechnology in the forefront, as I said, because it gives lower number of what we call as fatalities and the disease which you can pass through being healthy afterwards. Now, the main thing is there that whenever any product is produced, कुछ भी बनाएंगे तो waste तो आएगा साथ में. So how you make the management of that waste, you get rid of that waste, you minimize that waste, that becomes important. So this slide basically indicates that whatever method you use, whether you have the materials which are chemicals or chemical intermediates and final product which is produced, so waste is also generated at the same time. And you must have some ways and means to efficiently get rid of waste. As I said, in fermentation industry, the pollution is basically of unused residual carbohydrate. Sugar se banate hain na, so any kind of sugar, basically reduction, that is glucose, या fructose, a combination. Or maybe you start from starch also. Starch has to be sacrificed to convert that into smaller molecules, which is sugar. And then, so only that output, what you form as alcohol is something like 8 to 12%. So बाकी क्या हुआ? That is gone waste. So you have to get off that because your environment becomes polluted. So bioprocesses are basically those methods or techniques you say, process basically, which is involved to produce something, maybe get rid of something as waste, as pollutants or effluents coming from industry, and you treat them so the biological load is minimum. We call this BOD, that biological oxygen demand. That is minimum, that is there. And biocatalysis basically when you use these cells, या उनसे निकाले हुए protein, which work as enzyme, which can catalyze the reactions. So then it becomes biocatalysis. So I'll give you a couple of examples, okay? Because that talk has been built around these aspects of bioprocesses and bioproducts which are there. And bioproducts is what you finally get out of that because that is a value. And obviously that value is more. You see that some of the monoclonal antibodies which are used to treat coronavirus. What is the cost? Yeah, what is the cost of interferon? It goes into about 50-60 lakhs for 1 unit. So that is the economy, that is the finance part, the way the biopharmaceutical company becomes rich over days. So the methods and processes that you tend to follow, you can do in small volume. So that we call as batch. There is no shaking, kuch nahi karna, rakh dena hai. So when you prepare beer in your house, okay, maybe in your village, or maybe the people traditionally when they produce alcoholic fermented product, so they simply use the first process, that is batch. Second is called as fed batch, where you start with fermentation, you remove half of that and add fresh medium in that, so that also becomes fermented. That is called as fed batch. Stepwise you go. And third is continuously, you do it in a continuous fashion. So when your industry follows, in fact, the production of any product, they use huge volume. बहुत सारा material use करते हैं, तो बहुत सारा product भी बनेगा. So this is done continuously. Continuous fermentation, continuous addition of the starting material, substratum that is there, organism is already there, biocatalyst, and which it has to be removed at the same time. So that way you tend to use that, and beautifully we stay in a state that has pristine beauty, natural beauty. Temperature is so congenial for producing alcoholic beverages, beers and wines, and they have their own aroma, as Dr. Mahavir said, maybe nanotechnology.
because the stirring that you tend to cause that creates very tiny particles of aerosols, oxygen that is required during the growth of organism. Organism को ज़्यादा नंबर में बढ़ाने के लिए population आपको oxygen की जरूरत है. So when you shake, maybe that droplets, the air bubbles, they become very small, and they are giving addition to the growth of bacterial, the heat cells which are there. That is the process. You start from basically the fruit crushing, then the extracting of juice, and then you need to add the organism, that is yeast, that is the bakery yeast, which is used, Saccharomyces cerevisiae. And then you tend to filter and then pack. If there is, you want to preserve it, आपको उसको लंबे टाइम के लिए रखना है, so then you can go for pasteurization. Okay, that is a incomplete form of sterilization, which increases the life of the product. So this gentleman, how many of you recognize him? Yeah, Minchi. Okay, so the owner of that Minchi, okay, that brand, and he has in fact produced a product that is apple cider. So he has given a very different name to that. So here also innovation works. You can use different fruit extracts, juice basically. You can add sugar to that, and you can extract flavor also from different products, like ginger beer. How different this is, okay? Same way you can have jamun, okay, that beer, because that is considered to be anti-diabetic. That Krela beer, you add sugar because sugar has to be there. Only that is being fermented. So basically, when you have that process of fermentation, your starting material, sugar, carbohydrate, they are converted into alcohol. But sometimes something goes wrong. Okay, this is a natural system. And if there is any contaminating organism, जैसे कर्ड में लैक्टिक एसिड बनता है, अगर वो ऑर्गेनिज्म आपके इस शुगर में भी आ गया during fermentation along with yeast Saccharomyces cerevisiae, what will happen? Lactic acid will be produced. So Louis Pasteur studied this issue with a company, that a huge company, beer, the productive unit in France, Lille, that was a village over there, and found that there lots of beer, thousands of liters has to be destroyed because they became sour. Lactic acid was there. So he addressed this issue that it is very important to use a pure form of organism, that is Saccharomyces cerevisiae. That is there, but I believe that you will be recognizing this parcel. Next one. Yeah. So there are a couple of brands which we have, and we are lucky that there is a lot of variety in the state, variety of fruits and also vegetables. And vegetables, unfortunately, in the Tube area, which is considered to be one of the Asia's topmost town, having non-seasonal, unseasonal vegetables. But how they are produced? They are produced because you tend to put a lot of insecticides, weedicide compounds. They are called as man-made compounds. उसको term use करते हैं xenobiotic. Okay, so xenobiotics are man-made compounds. When you make them, it is very difficult to degrade क्योंकि आपका purpose है उसको एंटीवीड की तरह यूज करना, इंसेक्ट को किल करना, एफिड को किल करना, रैट्स को किल करना, बट यू आर नॉट कंसर्न व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट अमाउंट व्हिच कैन डू इट. सो जब आप एक्सेस में डालोगे तो क्या होगा? It will come to you indirectly through water system. So we talk about that also. So at the bottom you see there are brands that they are familiar with, maybe some of you, but lower is the pick, that is this first pick is of that your compound microscope without staining the cells. Yeast cells, Saccharomyces cerevisiae, they just look tiny structures, almost circular. And couple of them जो divide करते हैं, so they are budding. Okay, so एक के साथ छोटा सा attached दिखेगा. But if you enlarge this, how beautiful they look like. Okay, but they are microscopic, not nanoscopic. Next one. That what is that? I think state has taken initiative, maybe HIMCOSTE may be involved. There is in fact Himachal first mega food park expected to boost food processing industry and also boost the farmers that income that is there. And that is also mandate of our PM also, Modi ji, that you increase the income of the farmers. So we need these kind of things because अगर आप vegetable fruit को बहुत सारा yield हो गया, आप store ना करो तो क्या होगा? They will be damaged basically. And the rotten fruit can be used, yes, for producing beer and wine, but you can't eat it, you can't consume it. So you need this kind of thing, storage houses, which are storing these the fruits and vegetables for a long period of time. So that is a kind of mandate which is there. And this is just I put a comparison, and I was happy that the way in fact that small
gift got presented is some natural products. I think maybe Kamrati, something like this. So, Satpalji, can you have a look at this? This is a big venture. The person who is there in the middle is Jyoti Subbu. He is one of our students, now running 100 crore unit. That is a cooperative society in close to that Sharpur in Punjab, basically. Okay, so he is the man who could engage thousands of farmers around. And when he did his master's in biotechnology, I think around 202 or 203 years, those are 10-year chart. So he has a very clear mandate that he wants to produce the medical medicine plant globally. And from that, he took that initiative and see that the kind of product, which is a kind of museum which is there, of different products, and most components are from the citric things, okay, including amla and all these products and candy is there. So the thing is, we are producing, that's fine, but you need a valuation. What's it? Prove it, this is organic. And this is the certification of One Cert Asia that you could get. So Ministry of Science and Technology, GOI, Government of India, they are supporting this effort, and as well as the Punjab State Council for their science and technology. So that is there, and I'm happy that those products are items and there also. Next. Then comes the use of biocatalyst. Biocatalyst, that is there, biocatalysis. So here we use enzymes, which are naturally there, क्योंकि वो organism का part है. वो they help the organism to digest complex or simple carbohydrates. Energy source क्या है? Carbohydrate, protein, and fats, and they can use that basically. So couple of, rather it's a long list, I should say, and those which are put in the broader bold, they are the ones which we are working on in our own laboratory in Department of Biotechnology, HPU. So amylases, alanases, cellulases are all, they are there. So peroxidase is one which can degrade pesticides, okay, because that is enzyme that can decolorize the dyes. Industries होती है ना सारे कपड़े that what the clothing is putting the color. So color bleach, that is okay, but the color which has rendered on your cloth, that's fine, but remaining is thrown out. So maybe you're just gaining on the cloth about 5%, 90% is going out. So you use peroxidase in that kind of treatment. Lipases, I've been working for almost now more than 20 years. Beautiful enzyme. Normally, अगर प्रोटीन किसी एक्टिव एंजाइम को अगर आप अल्कोहल में डालोगे या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, it will lose its activity. But this doesn't do it. So that is a beautiful enzyme, and this works as in the bottom by performing catalysis both in aqueous and organic media. That is the beauty of this enzyme. Both it works. Then couple of enzymes which are at the bottom, they are basically those enzymes which are therapeutic, anti-cancer, then anti-urolithic, means just stones बनते हैं, urine stone या kidney stone, it dissolves them basically. That is the one oxalate carboxylase, that is there. So different organisms, they produce different kind of enzymes, and they are the sources which are there. That is there. So it means that microorganisms have natural capacity, efficiency, importance there. They produce these enzymes which are involved in biocatalysis. And these are the important enzymes which are useful for you to use them as the therapeutics, but अपनी treatment के लिए. And many of them, like the upper ones which are there, anti-tumor, anti-cancer enzymes which are including glutaminases, asparaginases, methonases, and also RNases. अगर आप इनको use करेंगे, maybe intravenously, what they do, they will get rid of these components which are like your glutaminase, क्योंकि जो tumor cell and cancer cell, they require this particular molecule. So if you get it out of the system, okay, you degrade this, then those cells are starved basically, okay, and they will die. Then you have anti-urolithic, already referred, that is used in case of bowel treatment also. Antiviral enzyme. So RNA is one. I will give you the picture that RNase enzyme, it binds to some kind of tumor cells which are of the colon, gut, that are epithelium. So it binds specifically and will be killing those cells by targeting them to undergo apoptosis, programmed cell death. So that number will obviously reduce. That is it. Then RNAs, different sources. Go to the next one. Bacterial sources are there. There's some properties which are put over there, and somehow, in fact, the RNase enzyme, this tend to bind to those cells which are negatively charged. Somehow,
tumor or cancer cells, when they're produced in the body, they have excess of negative charge. They are anemic basically, and the RNAs will be binding to some of the important molecule. It's written GOVOH, okay, GOVO, GOVOH. It binds to that RNAs, and once it is bound, the tumor cells is marked for killing. That is programmed center. So you get rid of those tumors and cancers by using RNAs, one of the therapeutic enzymes which is produced on bacteria. And these enzymes are available in the form of the medicine, okay, off shelf. You can purchase them, and this is the method which is we have used primarily to get it from an organism, that is Bacillus aeruginosa, and it has been extracted, purified, and the purified enzyme is put over there. So you see that this is a purified molecule and can be used to get rid of cancers of gut, basically colon cancer, that are your stomach cancer, uterine cancers, like that. And this is the mechanism basically where binase is the same RNA, is one type of enzyme. And this basically will be captured by the cell through the process of endocytosis. So zoology students must be knowing what is endocytosis, grabbing basically. So once this is grabbed, the cell will be marked basically for cell death through other proteins which are caspase. So this is dependent upon the energy provided to the mitochondria at the same time, but cell will be marked for death. उसको mark कर दिया जाता है, this will die basically afterwards. Then comes to what is important for us, being in state of Himachal also. When you use extensively pesticide, man-made compound, जो आर्मी ने बनाया है, अपनी breed को cover करने के लिए, you want to increase the yield, but you never know what is you're putting in the fields over there, what you're spraying in the crop. That amount is very high of pesticide. And these man-made compounds, they do not degrade naturally. They don't lose their biological activity. They will be surviving in your system. And system means soil, air, water, all these things. And what you're having, what you're eating, you're taking vegetables, you're taking water, so pesticide residues will enter your body. And these compounds are fat-loving. Okay? And see how many of have the fat content. So obviously, indirect indication is more of fat and possibly more of the absorbed residues of pesticides. And we talk about just an overview that through any means, whether you are working in industry or manufacturing unit, or even in your home, you are using, if you go to the plain area, maybe Pune, you use mosquito repellent. Use करते हैं ना वो लगाते हैं. So what evaporates? That is pesticide. That is insecticide, mosquito killer. But you are also taking it along with your breed that is there. So you grab it. So through all means, eventually it ends up in human. And we are losing in terms of fertility basically. That rate is very, very low. So what is happening in human, जो हम लोगों में हो रहा है, that same thing happens with animals. Now, what exactly is this? That अब pesticide है, तो उनको remove कैसे करेंगे? So think of the biotechnology where you will be using microorganisms basically, yeah, biological system including plants also, microbes, some fungi, some bacterial species, combination of them. When you use them, you spray in that particular area where pesticide residues are abundant. उनको कम करना है, उनको degrade करना है, so you use the concept of bioremediation, remediate basically. So that is an important thing. Number of that fungi are being used, like including predators, specialists, that is their fumigators. So all these are being used primarily to get rid of the pesticides from the soil, so that you have the minimal amount of the toxic these pesticides over there. And in the area that we have, Chub basically, how far this is from Shimla? About 35 kilometers. Okay. So they are growing, in fact, maybe the farmers must be quite rich, I believe. And they are growing unseasonal vegetables by contract farming with companies. Okay. And to them, they are providing these that vegetables and maybe fruits also over a period of time, okay, perennially basically, annually basically. So that way, off-season vegetables, when they are grown, there's indiscriminate, rampant use of the synthetic pesticides, fungicides, insecticides, and we are having, in fact, a lot of cases of cancers and tumors going to IGMC, or maybe that 40 is also in Manhattan. So
that is a very unusual scenario that a small state that is mature 2 or 3 decades earlier, 20 साल पहले, that wasn't the scenario, but it is now. That is there. So the state is basically in a phase of transformation. More money we need, and you are basically playing with the help of other people. You are gaining money, and maybe in small families, those who have the agricultural land, they must be growing something at their own, just the pesticide is separated. Okay, they consume that. They say it is organic, but for what the others will be receiving, they are getting those residues which are there. So main purpose is the one which is in green. Use green biotechnology, use biopesticide, and BT gene is one of that which is put in many of the plants as transgenic plants to get rid of the resistance, the pests which are there basically, which will destroy that particular plant crop that is there. And maybe the earlier thing, maybe hundreds of years, yeah, maybe thousands of years ago, people have used neem extract source, and now we are also supplementing that in as a biopesticide. So this is the same thing that is choke basically, and main thing is primarily that largest consumption of seeds as well as fertilizers and pesticides. And उनको ग्रो करने के लिए कंपनी की डायरेक्शंस पे चलना पड़ता है. एंड अगर वो कहें कि 6 बार स्प्रे करना है तो यू डू इट, 8 बार करना है तो you do it, because this is contact farming. They need that same output because seeds are very costly. They run into thousands of rupees even for 1 kg. So that cost is very, very high. And basically they are hybrid varieties which are genetically modified. So pesticide बहुत add करना पड़ता है. So what happens basically when you use these pesticides? You have all these pesticides, okay, that Pyrophos is there, Cybernetics, and all these, they're pesticides. And those vegetable or fruits look beautiful. And I don't know, they are never washed. So that the residues remain there in your hands. And when you eat, you indirectly or directly will be eating them. That is in fact a view, increasing number of cancers in those patients which are going to HIMCOSTE, okay, over the last 4 years or so. And that is just a picture that is just about 3 days back only. Insecticides, they're not available. So some insecticides, they were recommended by the agriculturists that the people who are there, they're making the recommendation, but it's not available. So what to do? What is available and being banned, that will be used as the pesticides. That is what happens basically. When you consume pesticides intentionally or unintentionally, there are long-term effects. And these effects, which are happening on the growing stage of children, they will be staying during your adulthood also. So once what has happened to you, the pesticides have done to you, that is a long-term chronic effect that will be happening. They act as cancer. I'll give you some data. They act as change in the genetic level, mutation. They cause changes in the baby which are formed in womb, in the fetus stage. Okay, that is called as teratogens which are there. Allergies are very common. That happens with pesticides. They are very strong neurotoxins. They will damage your abstract thinking. आपका जो सोचने का तरीका है, that is basically altered. And most importantly, they have same kind of functions. They mimic functions. Okay, and when they mimic this function of hormone, you have predominant population of the males in comparison to female. Because there is a usually I pick that slide where androgen is a male hormone, is to be converted into female hormone estrogen. So the conversion, the catalysis is blocked by pesticides. So you have more number of feminine number population, say state of Haryana, Rajasthan, okay, even the Bengal, that is there. So there is the ratio is skewed basically. More of female, less of male, which are more of male, less of female, which are there. And then infertility, that is there. And they are the possible type of cancers, including those of kidneys. And obviously, you see that how the cancer patients who had the kidney damage during COVID, what was their fate basically. So they had no way to resist the infection at that point. So alternatives, biopesticides. Okay, so try to look into that. There is some data which is placed over here. This last year. So basically, there is an increase in the consumption of
chemical pesticides, that is true, but at the same time, the rate at which we are using these biopesticides, that is also increasing on year-to-year basis. And that way, that obviously say we have ways and means for bioremediation using the biotechnology as one of the input that is. Then comes the other aspect, biotransformations, where you use purified enzymes for producing something which is important product. And here, as I said, we use in fact enzyme derived from some bacterial species that is fat degrading, lipase, okay, lipolytic, which degrade basically fat basically, that is their oils you say. But same way, it is also possible to degrade the colored dyes, which are used for coloring of leather, materials, maybe clothing, anything which is being colored, which is there. And also paper industry uses another enzyme to degrade cellulose, that is cellulose. So means that different enzymes that are produced by different microorganisms. And we have produced one of the enzyme, lipase, from an organism which grows naturally at a very raised temperature, high temperature. Manikaran, most of you must have visited hot springs. I know garam pani ke jo chashme hai wahan pe. So they also have organism. If you take out some organism and grow it in your laboratory, it has the same property that it can survive at temperature more than 60 or 70, but Manikaran has about 86 degrees centigrade, so this is hot springs. So that natural property is there. So you are not